नमस्कार, हेल्थ फॉर ऑल के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पूरा देश आजादी के रंग में डूबा हुआ है। कल हम स्वतंत्रता दिवस की एनिवर्सरी मना रहे हैं। आजादी के 75 साल हो गए। सबसे पहले हील फाउंडेशन की ओर से हम एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देते हैं। हमारा देश 75 साल पूरे होने की खुशी में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सभी देशवासी इसे अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। हमने भी सोचा क्यों ना हेल्थ केयर पर फोकस करते हुए ये पड़ताल की जाए कि इस मामले में आजादी से लेकर अब तक हमारी यात्रा कैसी रही, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम विश्व के मानचित्र पर कहां खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 75 साल में देश ने हर क्षेत्र में काफी तरक्की की है और दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। हेल्थ केयर सेक्टर भी पीछे नहीं है, चाहे हेल्थ एजुकेशन हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से या फिर हेल्थ से जुड़ी टेक्नोलॉजी और हेल्थ सर्विसेज हो। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री की तुलना में हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। आज हम आजादी के इसी पहलू पर बात करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम अगले 3 घंटे तक यानी 11 बजे तक यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव रहेगा। तो कार्यक्रम के शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं ये राउंड अप वीडियो और जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या किया। नमस्कार, हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स पर। अंग्रेजी में एक कहावत है, एडवर्सिटी डज नॉट कम अलोन। अभी हम कोविड-19 से पूरी तरह निपट ही नहीं पाए थे कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर यह बता दिया है कि इसे हल्के में ना लें। We kickstart this session with yoga, an episode of yoga on different forms of pranayama. So today we are going to talk about a very important topic and that is pranayama. हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाले हैं और वो है प्राणायामा। प्राणायामा एक बहुत ही ancient yogic practice है. It's not that it has just come now and it's the happening thing. No, nothing like that. It is basically from the time, maybe India civilization had come and from that time onwards, actually pranayama has come. What do we mean by pranayama? Prana, what does prana mean? Prana means life. Yama, that means controlling it or keeping it in our control. Okay, that is yama. So pranayama is basically keeping your life force in your own control. Like people say that
गुस्सा आ जाता है यार, मतलब कंट्रोल में नहीं होता, या फिर नहीं आती है यार नींद, कंट्रोल में नहीं होता, मतलब सोने की कोशिश करते पर कंट्रोल में नहीं होता. It has to do a lot with basically the way you are breathing or how consciously you are breathing. जब मैं बोलती हूँ कि conscious breathing, इसका मतलब कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ब्रीदिंग, राइट? आप 1 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो आप जिंदा रहेंगे. आप 1 घंटे खाना नहीं खाएंगे, आप जिंदा रहेंगे. आप अगर बाहर घूमने 40 दिन ना भी गए लॉकडाउन में तो भी जिंदा रहे, है ना? पर अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मिनट आप सांस मत लीजिए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ की है वो है ब्रीदिंग, द वे वी ब्रीथ. ओके, ये बात अलग है कि हम में से बहुत कम लोग उस चीज पे अटेंशन देते हैं. ओके, पर उस चीज पे अटेंशन देने को प्राणायामा बोलते हैं. नाउ इससे होता क्या है? व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, व्हाट डज हैपन? The diaphragm, which is basically a curvature. Can you see our diaphragm is basically a curvature. ऐसे convex shaped में होता है. जब हम inhale करते हैं, now let me inhale. अभी क्या है? ये flat हो जाता है. हमारा thoracic cavity expand हो जाता है, right? We inhale, the diaphragm become, thoracic cavity becomes more, lot of air inside our body. Now, when we exhale, what happens? The carbon dioxide goes out. That means lot of toxins get released by pranayama. We always talk about toxins getting released from our body, doing things, practices for toxin getting released from our body. But you need to know that your toxins from your body, 60% of the toxins from your body can be actually released through your breath, and that can be done by a conscious breathing or pranayama. The next session is an important session on monkeypox diagnosis, myths, prevention, treatment and management. डॉक्टर साहब, देश के कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है. ये एक एन ओल्ड डिजीज विथ न्यू कोट, फ्रेश कोट. हल्ला तभी मचता है जब किसी डेवलप कंट्री के बैकयार्ड में ये पहुंच जाता है और तभी WHO पैनिक बटन दबा देता है. आपको क्या लगता है कि WHO ने जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है वो एक गलत फैसला था, वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, या किसी डेवलप्ड कंट्री के दबाव में लिया गया फैसला था? ऐसा नहीं है कि उन्होंने जल्दबाजी में लिया ये फैसला, क्योंकि मंकी पॉक्स तो बहुत सालों से था. अफ्रीका के जंगलों में, कॉन्गो बेसिन में बहुत जगह इसके केसेस पाए जाते थे. बट नॉर्मली ये जो था ये बड़े बड़े शहरों में नहीं आता था. तो ऑफ लेट जैसे अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ही बहुत ज्यादा केसेस हो गए, बड़े बड़े शहरों के अंदर फैलने लगा. तो इन लोगों ने एक लेसन भी लिया पीछे कोविड से, बिकॉज कोविड भी जब आया था हम लोगों को इतना नहीं मालूम था कितना बड़ा एपिडेमिक होने वाला है. तो टू बी ऑन अ सेफर प्रोफाइल एंड सेफ्टी, उसके लिए WHO हैज स्टेप्ड इन और उन्होंने काफी हद तक काफी प्रिकॉशंस भी दिए हैं. लोगों की जागरूकता, आप जैसे इस पे हम बैठे हैं तो लोगों को बताने के लिए बैठे हैं कि इसको लाइटली नहीं लेना, because पीछे we have learnt a lot from COVID epidemic, so we have to take everything seriously, especially जब इसकी transmissibility इतनी तेज है तो we have to be over careful, over cautious. You have in your recently extensively handled COVID patients. If a monkeypox patient comes to a hospital, I have asked this question before to others also, what are the precautions that a doctor and the paramedical staff should take? The monkeypox patient, if comes in the hospital, all patients will be kept in some isolation wards. So that does not require very much air handling changes, because in COVID we used to have we ideally should have a negative pressure isolation rooms, but that was not feasible in such a large outbreak.
So in monkeypox, not very special preparations are required for maintaining wards. Yes, isolation with separate washrooms are required, and healthcare staff and all doctors needs to follow all the similar precautions. They should have wear gloves, and they should have all coverage around their body, because since it is transmissible through body fluids also. So any sweat in the patient's body, or if the lesions are there, or any pustule boil, if there is any rupture from the lesions, so all these infected material can easily transmit virus to healthcare staff also. So they need to wear mask, and they need to wear all protective gear. And we can say that by this time, as if we see today's scenario, we have lot of PPEs and kits available in our country because of the COVID. So that will not be an issue this time. The kits or the PPE precautions is definitely available at this time in our country. So these are the all basic precautions that healthcare staff has to take it. कई देशों में ये पाया गया है कि मंकीपॉक्स से जो मौत हुई है वे दरअसल एन्सेफ्लाइटिस से जुड़ा मामला है। क्या संबंध है दोनों? फीवर, चिल्स के साथ में बॉडी एक होना, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, रैशेस, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बट अगर ये सीवियर हो जाता है, इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन, एंड मोस्ट कॉमनली जो अभी डेथ हुई, इनफैक्ट इंडिया में भी जो डेथ हुई है वो एनकेफेलाइटिस की वजह से हुई है। सो दिस इज अ सीवियर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मंकीपॉक्स। मोस्ट डिजीजेस आर माइल्ड डिजीजेस और मॉडरेट डिजीजेस। बहुत कम लोगों में ये सीवियर इलनेस हो सकता है, और जिन लोगों में होता है उन लोगों में बेसिकली ये रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, बहुत एल्डरली पेशेंट्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन बहुत जो है, इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हमें ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि हमने कोविड-19 में भी देखा कि कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें कि चांसेस इन्फेक्शन के सीवियर होने के ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से मंकी पॉक्स में भी देयर इज अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु आर एट अ हायर रिस्क फॉर सीवियर डिजीज। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ माइल्ड इलनेस। एंड अगेन थोड़ा सा डिफरेंस है कोविड-19 में, बिकॉज कोविड-19 usually, as we know, droplet या फिर sometimes there is also airborne transmission, close gathering, जैसे कि डॉक्टर रामनजीत ने बोला। लेकिन monkeypox में usually it's by very close contact. Sexual transmission is possible, and a lot of cases have happened in men who like in MSM patients. So एयरबोर्न ट्रांसमिशन इतना कॉमन नहीं है, बट अगर मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और कोई एयरबोर्न एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर जैसे कि कोई ब्रोंकोस्कोपी या कुछ किया जा रहा है, तो उस समय एरोसॉल ज्यादा जनरेट हो सकते हैं, जिससे कि वो ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज क्लोज कॉन्टैक्ट यूजुअली अगर आप 6 फीट के डिस्टेंस में है मोर देन 3 hours, then chances of ट्रांसमिशन बिकम्स अ लिटिल हायर। इसके लिए मतलब ये बस ये इम्पोर्टेंट। दूसरा एक और चीज है इसमें कि इन्फेक्शन जो है सिम्टोमेटिक पेशेंट से होता है, अनलाइक कोविड-19 जिसमें कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी ट्रांसमिट कर सकते थे इन्फेक्शन, या फिर इन्फेक्शन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ट्रांसमिट होता था। सो मंकी पॉक्स में यूजुअली ट्रांसमिशन को सिम्टम्स के ऑनसेट के बाद स्टार्ट होता है। तो फिर थोड़ा सा सबको अगर मान लीजिए फीवर आ रहा है, तो अगर एहतियात बरतेंगे, आइसोलेट रहेंगे, तो फिर इसके उतने ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होंगे जितना कि कोविड-19 में था। You of course narrated how you first found the patient and how you treated him. But let me ask a question. Is there a protocol set in to treat monkeypox patients? Monkeypox as such doesn't require a specific treatment. It needs a symptomatic treatment depending on what symptoms you are getting, right? If you are getting fever, then fever needs to be treated with antipyretics and NSAIDs. If you're getting skin infections, then primary aim is to prevent secondary infection, secondary bacterial infection. So you give antibiotics and keep the skin lesions clean, give topical antibiotics, then so that it doesn't get secondarily infected. The lesions does not penetrate the deeper layers of skin and do not cause scarring.
If there is complications, the patient leads to complication, then it is treated accordingly. So there is no set protocol that every patient needs to be treated on this same line. It has to be individualized. I was not actually speaking about treatment protocols. I was speaking about isolation and other things. Like, when you find a patient, how long does the isolation last? What are the protocols to be taken? For example, one of the patients in Kerala, he played football with the other people, and the entire team was actually isolated. So what is the protocol regarding isolation? Presently, the protocol is isolation. If you have symptoms for 21 days, you have to be isolated. Your family members or your primary close contacts have to be isolated and have to be under active surveillance. That you have to be closely monitored for any active symptoms. The good thing about monkeypox is that, unlike as Dr. Neha said, that it is not transmissible unless you have the symptoms. So that is a good thing, that if you have symptoms, you isolate yourself. Symptoms even means you having fever or sore throat or a myalgia. That also counts in the symptoms, and you have to isolate yourself. Inform the authorities so that the sample collection can be done. Presently, home isolation, I don't think in Delhi it's allowed. Home isolation is not allowed. For the symptomatic person, he has to be admitted, and presently the centers I know is LNJP and GTP. There the sample collection is done. For the contacts, the home isolation is allowed unless they get the symptoms. So Ramanjit, you just mentioned that this virus was known in Africa, especially it was quite well known, and it gained prominence only when it came to the Western world. Well, now we have, deforestation taking place. So the bats have started coming home. We have pigsties at home. We have cows staying in the bedroom. Then we have rats all around. We have swine flu. So a lot of these zoonotic diseases are on the rise. So what is your viewpoint on this? Because the contact between humans and animals, the dividing line is becoming thinner and thinner and often quite gray. Definitely, we have rodents, we have other, zoonotic animals coming, but you see, only if it is infected, then we tend to have more of, we have the tendency of catching this sort of a viral infection. But definitely, these days, living in a good society, people who are not very well socioeconomically well off, there are definitely chances, but unless there's much of infection, because with monkeypox, normally it cannot spread without having a transmissible route. So if there is transmission, certainly we have to take care of that.
Namaskar and welcome to the 44th episode of Health4All. I am Shankar Raj, President of Health Foundation. This show is live on Facebook and YouTube. This episode comes as Free India turns 75 tomorrow. The nation has made tremendous progress in the field of medicine in the past 75 years, and it is a moment to be proud of. But we go back to our ancient wisdom, which is not just 75, but much more ancient than that. Ageless yoga designed to keep us healthy and prevent diseases. We have with us Dr. Pooja Pandey, a certified yoga teacher, an expert in aerobics and Zumba, and runs Ayurveda physiotherapy, combining all these techniques. She's also the creative spirit behind her successful YouTube channel called Ayurveda Physio Tips. Welcome, Dr. Pooja Pandey, and in advance, Happy Independence Day. Independence Day. I was a bit curious. There was a notice on your status saying that take care of your coffee, pelvic floor, and some intuition, and be strong. What is that actually? So that's basically that when you are a woman, you enjoy your coffee. So the coffee, pelvic floor muscle, your I feel women are much more intuitive than men, and self-care has to be strong. Then the women will be strong. So that's something which I like that phrase. I completely agree with you. I will not challenge that. But you can continue with your yoga till 8:55, and then we have some questions to be answered. Thank you. Namaste, Kishorji. Namaste. So today we will be talking about asthma and COPD condition. I'll be taking care of both physiotherapy and yoga exercises. So let us understand what happens in asthma and COPD condition. What happens is your airways is inflamed or swollen, and because of that, we experience shortness of breath, or we experience wheezing, and there is difficulty in breathing. We need to understand that why this asthma is coming to the patient, okay? Because there are different kinds of asthma, okay? There is basically one asthma, which is basically exercise-induced. So you cannot put that patient into high-intensity exercise, okay? Then there are allergy-induced asthma, which is basically because of any allergen. तो पेशेंट बोलेगा कि कहीं भी मैं जाता हूं जहां पे डस्ट होता है मुझे बहुत कॉफ आती है या वीजिंग आती है. So you need to get the allergy test done and need to find out what are the allergens which is causing this asthma. Some people are basically, and generally asthma is a chronic condition. It stays with you for some time, right? It doesn't just come and go like that. Okay, so some people are born with that, and many, I think in Bangalore, you will see many children born with allergic asthma. So what can we do about it? Okay, both yoga and exercise can help you actually may not be treat completely, but yes, your symptoms can reduced by asthma. By these exercises and yoga, okay? One, because it is related with lungs, there are a lot of things which you should do about it. But before what you do, what will be the uses of it? आपको क्या benefit मिलेगा अगर आप exercise करेंगे? क्योंकि generally asthma और COPD के patients डरते हैं exercise करने को. उनको लगता है कि अगर हम exercise करेंगे तो wheezing बढ़ जाएगी या shortness of breath बढ़ जाएगी. ऐसा नहीं होगा अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट या योगा थेरेपिस्ट के अंडर एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज जो बहुत अच्छी होती है एंड डजंट कॉज सो मच ऑफ स्ट्रेन ऑन योर लंग्स इज स्विमिंग. स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अस्थमा पेशेंट्स के लिए. आप you should not be allergic to chlorine and all, then you definitely cannot swim. But because swimming does not cause so much pressure on your lungs, it actually improves your cardiopulmonary endurance, and it helps you improving your lung capacity. So swimming is very good. Recreational biking is very good. When I say recreational biking, so when you are cycling, you cannot be cycling for competition. You have to
be in rhythm of your breath. So when you feel comfortable with your breath, till that time you can do cycling. Okay, light walk is very good. Brisk walk I would avoid because you may become breathless. Okay, so apart from this, actually you can even do, say, hiking. Say for example, generally people with asthma will have a problem with stair climbing. So what they can decide it, okay, today I will be doing, say, 20 stairs up and down 3 times, okay? And then they can do 20 stairs up and down, take a break, let your breath settle down. Then do 20 stairs up and down, take a break, let your breath settle down. And similarly, the third set. In any of these exercises, if you feel breathless or if you feel wheezing, then of course you need to slow down, okay? Apart from this, you should do all the chest opener exercises, both from physio and yoga point of view. Now, chest opener exercises are all the exercises in which you basically widen your chest. So where you open up your chest. So exercises like triangular pose where the sides are opened up. So they are also very good. So where you can open up the side or you can open up the chest. So even small exercises like just raising your hand to front, to the side, to diagonal itself is a very, very good exercise. So I will just show you. So that even if you don't have time, you can do these exercises at least. You are here, just bring both the hands up, come onto your toes, breathe in, slowly breathe out. Breathe in, slowly breathe out. Breathe in, slowly breathe out. You can do these exercises 10 times, maybe 3 sets. Similarly, both the hands together, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. And taking it to the side, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe in, opening up like this. So all these openers, chest opener exercises, we tell them, they're very, very good. Then the triangular pose, which I was talking about, your legs slightly apart. Take both the legs to the side. Breathe in, breathe out. You turn to the side and open up your chest. Now this is triangle. You can even do revolve triangle, in which you basically come at the center and try to open your chest. So both the hands are at the same level. Open up your chest, come back. And you need to understand, because it's asthma, it's very, very, very important that you don't hold your breath at all and do the repetitions as many times as possible for you. So there is nothing like you should do this 10 times. Do it as many times as possible. Similarly, you can do it on the other side. Okay, so breathe in, bring it up, breathe out, take it to the side, keep breathing in and out. Hold it there for 5 to 10 seconds. Similarly, you can do the revolve triangle, as I told you. Come to the side, come back, and relax. Apart from this, all the back bends are very, very good. So if we keep opening our chest, this is very good. You know, lunging. So the warrior pose, the third one, in which my right leg is facing towards the ceiling, my left leg is basically towards the computer. Both the hands together and take your arm. So this is very, very good for. And keep breathing in and out. Similarly, you can do on the other side. And relax, come back. Okay? So you need to understand that you can make your own exercise form. Make sure, 1, your chest is opening. 2, your sides are opening. So just say, for example, I'm sitting and I keep my elbow down on the right side and I keep breathing. So this is also very good because your sides are opening, right?
breathe out. Come on, breathe in, breathe out, keep breathing in and out. And breathe out and bring it back. So you can make your own exercise form. Yoga and physiotherapy does not tell you to follow a fixed protocol. They tell you the concept, and the concept is opening your chest and opening the side. तो आपको याद रखना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एज अ अस्थमा पेशेंट, आपका all these forward bending exercise is definitely not so recommended for, especially if you are a chronic asthma patient. You don't want to constrict your chest, you want to open it up. So आपको जो भी एक्सरसाइज करना है याद करिए, ध्यान से याद करिए कि आपका चेस्ट ओपन अप हो रहा हो और साइड्स ओपन अप हो रहा है, जिससे कि आपका जो डायफ्राम है वो मैक्सिमम इन्वॉल्व हो, एब्डोमिनल मसल्स मैक्सिमम इन्वॉल्व हो. सो इसीलिए ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेगी. अपार्ट फ्रॉम कार्डियो एक्सरसाइज, याद रखना है कि थोड़ा बहुत कार्डियो हर किसी को करना है, क्योंकि आप अपना कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं. जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको होता है? एक तो कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस बढ़ता है, आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे कम होता है. तीसरा, आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स होता है. Not only strengthening of say back and core muscles, but strengthening of your breathing muscles. Okay, so आपका strengthening of breathing muscles होता है. उसके अलावा आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है और ओवरऑल आपकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट आती है. तो इसीलिए ये एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि दिस कंडीशन वेदर इट्स सीओपीडी और अस्थमा, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग है. इसलिए इन कंडीशंस में प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का मेजर यूज है. ओके, तो इस कंडीशन में आप प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भाग नहीं सकते, आपको रेगुलर बेसिस में करना है. नाउ मैंने बहुत बार आपको कपालभाति या भस्त्रिका बता रखा है. आपको याद करना है जब आप सीओपीडी कंडीशन के पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट है, तो आपका जो एक्सपिरेशन है कैन नॉट बी सो मच. ओके, इट कैन नॉट बी सो फोर्सफुल बिकॉज यू मे गेट ब्रेथलेस. सो इट हैज टू बी स्लाइटली सटल. तो आपको मॉडिफाइड वे ऑफ भस्त्रिका या मॉडिफाइड वे ऑफ कपालभाति करना है. मैं आपको दिखाती हूँ. तो हम जनरली भस्त्रिका वज्रासन में बैठ के ऐसे करते हैं, राइट? तो इसके लिए you don't have to sit in Vajrasan, you have to sit in Sukhasan and make sure you roll your shoulder back, your chest is open up, your one hand on the abdomen, your other hand can be on the thigh or just above the knee. You have to breathe in and breathe out. Normally for Bhastrika, breathe in. तो आप डिफरेंस पता कर पा रहे? जब हम नॉर्मल भस्त्रिका करते थे तो हम ऐसा करते थे, दोनों हाथों को कंधे के पास रख के ब्रीद इन ब्रीद आउट. इस कंडीशन में व्हेन आई हैव अस्थमा आई डोंट फोर्स माई सेल्फ सो मच. सो व्हाट आई स्टिल डू द फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट, बट इट इज मच सटल. बहुत आराम से करते हैं. देखिए, Now, why I am telling you to keep your hands on the abdomen? आपको याद रखना है कि भस्त्रिका और कपालभाति में बहुत अंतर है. कपालभाति में आपका फोर्सफुल ब्रीदिंग फ्रॉम द नोज है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन कपालभाति. तो आपका जो एब्डोमेन है वो इतना मूव नहीं करना चाहिए. तो एब्डोमेन को आप सपोर्ट करें या उसको होल्ड करें. अब देखिए, अगर मैं ब्रीद इन कर रही हूं, मतलब ब्रीदिंग आउट मेरा 4 to 5 काउंट्स है और ब्रीदिंग इन मेरा 3 काउंट्स है भस्त्रिका में.
Now, when I am doing Kapalbhati, it's the same, but there will be abdominal contraction. So you will breathe in normally, breathe out normally. For Kapalbhati, now how is it different for COPD and asthma patient? आप बहुत subtle कर रहे हैं. So instead of doing this, you are actually doing so you are making it subtle, very important. Okay, आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि फोर्सफुल नहीं होना है. कितने काउंट्स करना है, जितने काउंट्स आप कर सके उतने काउंट्स करना है. इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत ही अच्छा है, विच इज बेसिकली ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग. आप अपना एक्टिव नॉस्ट्रल फाइंड आउट करिए, ब्रीद इन फ्रॉम द एक्टिव, ब्रीद आउट फ्रॉम द अदर, ब्रीद इन फ्रॉम सेम, ब्रीद आउट फ्रॉम अदर. हमेशा याद रखिए कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं वो काउंट्स हमेशा ज्यादा होगा देन कंपेयर टू व्हाट यू आर ब्रीदिंग इन. आप सांस अंदर अगर 4 काउंट में कर रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे 6 काउंट. ओके, एक्सपिरेशन हैज टू बी मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन. ट्राई टू prolong your expiration. Okay, apart from this, I will also tell you 3 physiotherapy breathing exercises. So first is diaphragmatic breathing. For diaphragmatic breathing, your one hand will be on the abdominal, your another hand on the chest. Okay, now there are of course lobe breathing, which I will tell you later, but first you have to do this. What you have to do is your one hand here, you need to breathe in loud as in not loud, but the breathe, okay, is what I meant, not loud. Okay, so when I breathe in, did you see? So very important in diaphragmatic breathing when you practice is your abdomen will expand to the maximum. Your chest will remain same. So completely relax your neck, relax your shoulder. Your chest should not come up. Okay, so you cannot be doing this. This is wrong. Don't do this. Okay, आपको ये stabilize करना है और movement सिर्फ और सिर्फ abdomen में होगा. ओनली जब आप ये ब्रीदिंग मास्टर कर जाते हैं, मास्टर मतलब आप जब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, ओनली द एब्डोमेन इज एक्सपैंडिंग, चेस्ट इज रिमेनिंग द सेम, ओनली एब्डोमेन एंड साइड्स विल ओपन अप, दिस विल रिमेन स्टैटिक. Don't do this, don't do this. Okay, then you are doing a very, very superficial breath. Okay, we want the deep breath to happen. Only when you master this, जब आप ये आराम से कर पा रहे हैं, तब आपको basically lobal breathing, as in for the lower lobe, middle lobe and upper lobe diaphragmatic breathing करना है. So breathing आपकी same रहेगी. Okay, breathing change नहीं हो रही है, बस positioning of the hand change हो रहा है. This is basically for your lower lobe. So just below your diaphragm or just below the rib cage. So you are able to feel the rib cage, and here is the abdominal cavity, right? So you just keep it below the rib cage, and you have to keep it as if, you know, if I keep a cup here, it should not fall. So don't do like this. Your hand should be like this. Shoulders relax. Relax your shoulder. Relax your neck muscle. Take a long deep breath in and breathe out. In diaphragmatic, breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, hold 2. So आपने देखा 4 काउंट हमने ब्रेथ लिया, 4 काउंट हमने होल्ड किया, 6 काउंट हमने छोड़ा. Okay, so that is diaphragmatic breathing for you. Now, if you are doing 8 times here, you will also do 8 times here, which is basically for the mid-lobe. So again, the diaphragmatic breathing. This is for the mid-lobe. Now for the upper lobe, now for mid-lobe, what you will do is you will keep your thumb on the axilla. आपका जो armpit है, वहां पे आप thumb को रखेंगे और आपकी और सारी fingers सामने आ रही है. So ये आपका mid-lobe हो गया. Third lobe, which is basically the upper lobe. Upper lobe के लिए आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे so that this completely opens up. And breathe in, breathe out. One more time, breathe in and breathe out. Breathe in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, 5, 6, hold, 2. Breathe in, 2, 3, 4. So आपको इस तरीके से आपका upper lobe का exercises करना है. Okay? So that is upper lobe, middle lobe and lower lobe. Diaphragmatic breathing. Breathing आपकी ये रहेगी. तो start आप इससे करिए. You can progress to this. Next breathing, which is very, very good, is basically pursed lip breathing. Okay, pursed lip breathing में आप क्या करेंगे? नाक से सांस लेंगे और मुंह से लिप्स को, जैसे कि आप विसिल बजाने के लिए विसिल जैसे बजाते हैं, उस तरीके से आप अपने होठों को रखेंगे और सांस को छोड़ेंगे. So you breathe in normally, and while breathing out, you breathe out from the mouth. Now, very important in this, what you saw is when I'm breathing in from the nose, 4 counts. When I'm breathing out from 8 counts, you can just see this. Since I do yoga regularly, it happened for me 12 times. But people who have asthma or COPD, they'll have shortness of breath. So maybe 4:8 ratio is good enough. So that's pursed lip breathing for you. The next is straw breathing. Straw breathing is basically you will try to, how you sip a juice. Similarly, you will try to sip the breath. Okay. So, trying to sip the breath, similar way you can try to sip, how you try to sip the juice. Similarly, you will try to sip the breath and take it out from the nose. So this is one of the breathing which you take from the mouth. Breathe in and then breathe out. Similarly, how we did in pursed lip, in this also you inspire less, expire more. मतलब सांस अंदर कम काउंट्स के लिए लेंगे और सांस छोड़ेंगे ज्यादा काउंट्स के लिए. इसके अलावा there is something called spirometer. Give me a second. I will have a spirometer here.
am not able to find out. So there is spirometer, which actually COPD patients can use very effectively. What is there in spirometer? So there are balls, okay, 3 different balls of different level of breath. So there is 200 ml, there is 400 ml, there is 600 ml. And you need to actually hold the equipment and just blow, and then you actually round it out and sip. So in that, there is a lot of biofeedback. Biofeedback as in you are able to watch yourself progress. So initially, maybe the yellow ball will go up or the white ball will go up, and slowly the red ball will go up. So you will actually see yourself progressing. So you can also use spirometer on basically a regular basis. So apart from this, you need to remember only 3 things. 1, cardio is very important. Don't be scared of cardio, because a lot of asthma patients are scared that if they do exercises, they will actually become breathless. You need to understand, you need to be in rhythm of your breath, understand your body, and do exercise accordingly. The minute you start feeling slightly breathless, stop the activity. Also very important is when you do any kind of cardio activity, even strengthening is very good. So dumbbells and all, they are very, very good for asthma patient. For example, if I just hold the dumbbell and take it all the way back where the chest is opening up, so they are also very, very good for the patient. Okay, so whenever you are doing strengthening and cardio, there has to be proper cool down and warm. So you should warm up before the exercises and you should cool down after the exercises. Don't stop it abruptly, because then you may become breathless. Okay. Second, very important point is you have to do either breathing exercises or pranayama, which is very, very much. Fourth point is you have to do all the exercises which are basically the chest openers or the side openers. So you can actually have your own exercise form. That's absolutely fine. Make sure your chest is opening up. Make sure your side is opening up. I'm a person who does not follow any protocol for any problem. I basically listen to the patient. I understand the symptoms and try to give, according to what the symptoms they have, a customized plan for every single person. So I would like you to know that you understand your body the best and you know what exercises are best for you. I can only guide you, but in this journey, you can be your own master. So come out of asthma or, that breathlessness and feel comfortable with the exercises, because exercises is good for asthma. Thank you so much. Thank you, Dr. Pooja Pandey. That was a wonderful session. Something I wanted to ask you was during the first and second phase of COVID, yes, the patients, a lot of people whose lungs got badly affected. So did you as a doctor, what was your experience in using the techniques of yoga and pranayama in trying to reduce the symptoms of these patients? So most of the patients whom I saw, there were 2 of them. Okay, one is I saw ICU patients, okay, who were already admitted and all that. But in that, we do something called chest physiotherapy. Okay, chest physiotherapy is basically understanding where exactly the secretion is more, trying to position them so that the secretion become less. The second is tapping the lung from the wrist, not from the shoulder, from the wrist, and trying to decrease the sputum and trying to bring it out from that. And there is something called cuffing, huffing. So we were following these techniques, and immediately after the session, there was increase of oxygen capacity immediately. Okay, because I can't tell ICU patient to perform things. They're already in a very distress. Okay, most of them were on oxygen. That's why they were in so they will not do anything. So we were doing it for them, and we could immediately see the results. The second type of patients which I saw was basically online, in which they already knew me and they came to me asking what should they do because they have COVID. And I told them to start with the day they got diagnosed, start with basic pranayama and these exercises.
what happened is some of them, they started and they progressed very well. Some of them had very, very bad COVID. So what they were not able to do all of them, but they continued doing. Most of the patients who I have seen online, none of them actually went to hospital. So I am 100% sure that, these exercises helped them. And personally, me, I have told you, Shankar, that when I got COVID, I have not taken a single medicine. Okay, I had got COVID in the 3rd phase. I have not taken single medicine. I only took Amrit, Tulsi, Haldi, all that, which is basically one of the herbs. And I only continued with the exercises. Rather, I've told you I've done live during when I had COVID, and I was doing that COVID patient, do exercise with me. So I was going live and doing these chest opener exercises, the basic ones. So you have to only do basic one. But just, when I just do this, suddenly this opens up. And when I come back, I feel much better. Okay, so you need not do 50 times, 20 times, not like that. Just listen to your body and do it as much time as possible. Yeah, over to you, Kishore, for your round of questions. थैंक यू सर. पूजा जी, आपने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो अस्थमा के पेशेंट है उन लोगों को सावधानी रखनी पड़ती है. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में किस तरह के पेशेंट्स को नहीं करने चाहिए, इसके अलावा और क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? देखिए, आप माने किशोर जी या ना माने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हम सब कर ही रहे हैं, है ना. मैं आज आपको बोलूंगी कि नहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज मत करिए, आप ब्रेथ छोड़ दीजिए, तो मर ही जाएंगे. ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हम सब कर रहे हैं. किसी को पता है और किसी को नहीं पता है. मैं बस बोल रही हूं कि आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए. मतलब कि आप जब ब्रेथ ले रहे हैं तो देखिए आपके अंदर क्या जा रहा है. जब छोड़ रहे हैं तो देखिए आप कितना आप आराम से छोड़ सकते हैं. तो मैं ये कह रही हूं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एज सच हर कोई करता है. हाँ, आप ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं, आप वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, तो आप तो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं. उसके अलावा जो पेशेंट है, जो इवन हॉस्पिटल में भी एडमिट है और जिसकी हम रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं, उनको हम सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से चालू कर सकते हैं. क्योंकि ब्रेथ जो है, जैसे मैंने आपको बोला था, आपका टॉक्सिन सबसे ज्यादा ब्रेथ से निकलेगा. ओके, और अगर आपकी ब्रीदिंग बेटर होगी तो आपकी हीलिंग बेटर होगी. तो इसीलिए मैं ये मानती ही नहीं हूं. हाँ, अभी अस्थमा अटैक आया है, राइट. अभी राइट नाउ आई एम इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग है मेरे को. मैं तब पेशेंट को नहीं बोल सकती हूँ आप एक्सरसाइज करिए. आप वो तब नहीं कर सकते हैं जब आपको कोई अटैक आया है. पर जब आप सही है, आपकी ब्रीदिंग सही है, तो आप माने या ना माने, आप ऑलरेडी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. बस मैं बोल रही हूँ कि कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, नेजल ब्रीदिंग करिए, पर्स लिप ब्रीदिंग करिए. तो ये छोटी छोटी टेक्निक बता रही हूँ. पर चाहे या ना चाहे, कितने बार ऐसा होता है कि अभी देखिए, मैं स्कूबा डाइविंग गई थी, तो उसमें नाक से सांस ले नहीं सकती, उसमें मुंह से ही सांस ले सकते हैं. तो मैं मुंह से सांस ले रही थी, तो पर जब आप पानी के अंदर है ना, तो आप इतना इन कोऑर्डिनेशन विद योर ब्रेथ होते हैं कि आपको एक एक सांस जो अंदर आ रही है, जा रही है, पता चलता है. तो बस यही बोल रही हूँ कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सांस ले रहे हैं. बस मतलब ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है. रेगुलेट करना. देखिए कि आपकी एक्सपिरेशन ज्यादा हो. हमेशा ट्राई करिए कि एक्सपिरेशन ज्यादा हो, इंस्पिरेशन का एक्सपिरेशन ज्यादा, जिससे कि आपके टॉक्सिन्स ज्यादा रिमूव. आपने अभी मुंह से सांस लेने की बात की और स्ट्रॉ ब्रीदिंग के बाद भी दिखाया आपने स्ट्रॉ ब्रीदिंग कैसे करते हैं. हम लोग बचपन से सुनते आए कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ये मिथ है या इसमें सच है? तो ये नॉर्मल कंडीशन में हम कभी भी एडवाइज नहीं करते हैं कि आप मुंह से सांस लीजिए. ये कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, इसीलिए आप कितने बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, और फिर तो मैक्सिमम आप 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम आप 3 मिनट करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे भी नहीं, राइट. तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप जब इसको जब पानी को अंदर ले रहे हैं तो उसके साथ हवा भी तो जा रही है. तो जब हम स्ट्रॉ यूज करते हैं तो हम एनीवे स्ट्रॉ ब्रीदिंग तो करते ही करते हैं. तो ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरे दिन स्ट्रॉ ब्रीदिंग करिए. मैं कह रही हूँ कि 20 बार करिए या 30 बार करिए, जितने बार आपसे हो पाए. अगर आपसे 5 बार ही हो पाता है तो 5 बार करिए.
इसका साइंटिफिक रीजन क्या है पूजा जी? साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों कहते हैं कि मुंह से ब्रीदिंग जो है अवॉइड करना चाहिए? देखिए, हमारे नेजल पाथ में अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हम इनहेल करते हैं, या कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती हैं, ओके, जो हम इनहेल करते हैं, पर वो नाक के अंदर रह जाती है, हाँ, और जो श्वास है वो अंदर चली जाती है। बट जब हम मुंह से ये काम करते हैं तो वो वहां पे फिल्टर कोई नहीं है, मुंह में सब कुछ अंदर जाता है। मान लीजिए काली गैस निकल रही है, ठीक है, और आप मुंह से सांस ले रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स विच वी आर इनहेलिंग आर मच मोर देन व्हाट वी कैन। ये हमारा फिल्टर है, ये छन्नी है, जो चाय की छन्नी वाला काम होता है ना, वो नाक करता है। तो ये छन्नी से करेंगे तो अच्छी सांस अंदर जाएगी, और अगर मुंह से करेंगे तो मतलब मैं सबसे इजी वर्ड में अगर आपको समझा सकूंगा। थैंक यू पूजा जी। मिस्टर शंकर। Thank you, Dr. Pooja. Just one last question. Are there some, you mentioned about Bangalore, asthma hotspots in India? Are there asthma hotspots in India? Bangalore is known for asthma and COPD condition. Okay, there is basically here there are more allergy related pollen related asthma is very high in Bangalore. Which actually is basically, I know patients who will say that we feel so breathless here in Bangalore, or every 2 days we have an attack, but when I go to some other city I'm fine. So it's very 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 high allergies. Bangalore is known for its traffic and allergies. Before traffic and allergies, actually there is something called the Congress grass that created allergies. Yes. The pollens from Congress grass, it flies very fast. But I am not sure how much grass and greenery is there in Bangalore anymore, but allergy stays. Yes. Thank you very much. It was wonderful having you, and I should also congratulate you on your new look. I think. Thank you. I finally cut my hair. Yes. It's good on the eve of independence. You look new. It's wonderful having you here with us. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Welcome back. We now move on to your health counter on hypertension and monitoring blood pressure at home. To speak on this, we have with us Dr. Jagdish S. Hiremat, President of Cardiology Society of India, Pune chapter. He is a renowned interventional cardiologist who has been practicing in Pune for the last 25 years. He currently serves as the director, Cath Lab, Ruby Hall Clinic. Welcome, Dr. Hiremat. Can you unmute yourself? Yeah. I heard that you have a presentation to make before the talk, so you can go ahead with your presentation, and then we'll come back to the questions. Yes. Thanks for the invite. I am sharing my slides right now. The most common sentence that is heard nowadays is, am I audible? Yeah, you're audible, yes. So we are in the next 15 minutes or so, see some basic aspects of high blood pressure, hypertension, and also the importance of monitoring it at home. The glucose actually made this revolution. Now we have glucometers every household, and monitoring glucose at home has made so much difference to the patients and also the treating doctors. Same is true of monitoring blood pressure at home, but it needs to be done scientifically. And on this Independence Day, I wish you all the compliments. We've completed glorious 75 years and many more, much more glorious years, decades and centuries to go for us. This is a world of webinars, and we as doctors have reached to a stage wherein mujhe webinar nahi attend karna is what we get. We need to crave for physical meetings, but it's such a good technological advance that today the whole country can get connected. I'm sitting at my home and it's very lovely weather outside. So nice to be with you all today for this scientific deliberation. It's a medical world, a little complicated, is called DAFR,
DALY, DALY, Disability Adjusted Life in Years. For example, somebody was destined to live for 70 years, but he died at the age of 60 because of complications of hypertension. So he lost 10 years of his life because of the disease. He contracted or started with hypertension at the age of 50. So 10 years was his lived with disability. So 10 years of disability and 10 years of shortening of the lifespan. So the hypertension for this gentleman was 20 years of DALY. So we are living with this disease, which is chronic. Does wear you down or is with you all the time. I, in fact, in a light-hearted manner, compare it with wearing of specs. Once it starts, you have to wear it lifelong. So hypertension is something like that. And we need to learn that it's a high DALY disease. Compare it with a cancer. Maybe somebody contracts at the age of 70 and the person dies at the age of 71. So that DALY of cancer-related illness was very short. But hypertension lingers on with you and the DALY is very long. The thresholds that we have for everyone is 140 by 90. Most of us should be below 140 millimeters of mercury by 90 millimeters. The upper one is called systolic, the lower one is called diastolic. But when we start treating an individual, most of us should be below 130 and 80. So the figure to remember is 130 by 80. Suppose somebody is elderly, above the age of 60, we may allow for about 140 or so. But nowadays, things have changed. The olden rule, 100 plus age is gone. All of us have to be below 135, surely, especially when you are treated for an illness. There are unique features of hypertension in India. It starts early, like whatever starts at 45 abroad, it is 35 here. Urban prevalence is much more. Maybe it's related to a statistical bias. There are many other cardiovascular risk factors like diabetes, cholesterol, coronary artery disease, strokes associated with hypertension in India. There is significant change, especially north in winters, that blood pressure becomes different. In high blood seasons, it is doses have to be changed. The overall rise in blood pressure in general population happening in the last many decades. There is lack of awareness and treatment control rates are not the best in India. And early occurrence of HMOD, which is a very complicated term, hypertension mediated organ dysfunction. That means if hypertension lasts for a long time, it can affect your organs like the brain, the eyes, the kidneys, and the heart. So it's called the HMOD. So hypertension is not just the numbers, it is the prevention of these HMOD, which is important in management. We can say that 33% of the adult population is hypertensive. That means if the estimates are right, almost 7,000 people listening to those who might listen to it on YouTube are hypertensive individuals. So we are talking of a mammoth proportion. And the problems for us or in the society related to the Indian scenario and management of hypertension is lack of awareness, or maybe we people don't want to know about it. There could be self-medication or no medication with the idea that I don't want to take medication. There could be the Institute of Family Doctors is disappearing, and that's why you can't reach a specialist every time. So that is posing some problems. The insurance that we have is still immature and it covers mainly for indoor admission. There is not so much cover for people who are taking medication on an OPD basis. And there are too many options, like too many pathies are being practiced here. So people would venture from one pathy to the other, one doctor to the other. And of course, to final knock on the head comes to the Google, because there's too much information. The information needs to be converted to knowledge and finally to wisdom. That unfortunately doesn't happen. So large population goes through Google and probably faces more problems than get benefited. And of course, there are perpetual financial issues. Daily, monthly management of hypertension can mean some amount of
definitely dent on your pocket. So all these are hypertension management issues. So a Google picture of Niagara looks like this, very pretty because it's taken from far. But this is the picture I get when I walk to my hospital every day. So realities, ground realities are different than what we think. Blood pressure measurement is the crux of all this, because unless you have a good solid information which is correct, you cannot treat it very well. So the mercury manometers are banned. In fact, I have not used mercury manometer maybe the last 7 years or so. It is a health hazard, especially for children. So it is given up in the world. So now what we have is the electronic ones, or the dialed, the arynoid type, that is the dialed ones. But prefer the electronic ones. There is a notion that these are not accurate. In fact, they are very accurate, but they are very sensitive to the method by which you measure the blood pressure. So that's what we are concentrating on today in this particular talk. But a properly maintained and calibrated oscillator device would be good enough. The standard cuff has a bladder which will encircle your arm to about 2/3. And the bladder should encircle and cover 80% of your upper arm length. In the first visit, take average of 3 readings is what we advise everyone at the interval of 2 to 3 minutes. Many times it is not possible because doctors' clinics have become too busy these days. So that's why the home monitoring will be extremely helpful in these situations also. Unless the person has a very high blood pressure, what we call as stage 3, it is better to, once you get a high reading, better to confirm, do it again, do some home monitoring, allow some time, and then start treatment, because it is a lifelong treatment and we have to realize that we are into serious business. There is a method called sprint method, because this method is wherein the patient comes. Am I audible? Yes, you're audible, yes. This method in which the patient sits in a quiet room and his blood pressure is measured by an instrument. There is no person around and 3 readings are taken. So this is the best way to do it, and it's possible to do it at home and not in a doctor's clinic. I have hidden the company's name here, but these kind of electronic devices are important nowadays in every household. Just like we have a thermometer, we have the pulse oximeter, we have the glucometer, we have the weighing machine. Our medical equipment at home must be now bolstered by a decent electronic blood pressure instrument. Now the heart of the talk, the home monitoring blood pressure measurement technique. I'm going to repeat this slide again after some time. It is a sitting blood pressure measurement, not lying down. So sit in front of a table like this gentleman shown sitting. Both legs are touching the ground and they are not crossed. They are separated and touching the ground. The back is rested on a chair, and the tabletop, the instrument, the heart, and the arm, they are at the same horizontal level. So if the table was to be lower or higher, it would not record blood pressure correctly. So the arm, the tabletop, the instrument here, and the heart, they are almost at the same horizontal level. Then do not talk or move during the measurement, or don't use the mobile phone. Don't uncross your legs, and feet should be flat on the ground. Once you are seated like this, it's important that there is no cloth on the arm. On a bare arm, tie the cuff. And then I always instruct my patients to, by clock 60 seconds, please wait in one place doing nothing. If you do that, you will get the best measurement of blood pressure. Of course, ideally, it should be 3 measurements. How practical it is, you can decide for yourself. But when you start, then switch the machine on. These machines do not require any stethoscope, or there is nothing the person has to do. The machine will give you the reading. That's the beauty of it. So it has to be done on a quiet period of the day when you are not agitated, you have not had a smoke or a tea or exercise, a meal or a sex within last 30 minutes. That's the best time to measure a blood pressure. So what we need is resting blood pressure measurement. And that has to be, and maybe I would say in my world, it would be 3 to 4 p.m. on a Sunday afternoon
would be the best time to do it. And every weekly, if you are a hypertensive, that's the best way to do. By doing this, what we do is we rule out what is called as a white coat hypertension and a masked hypertension. These are two technical terms. White coat means, I'm sure all of you have an experience wherein a person goes to a doctor or a hospital, the white coat there itself raises the blood pressure of that gentleman. And that is a false alarm. Am I audible? Yes, you're audible. Yes. Because sometimes it is showing me I'm muted. So, okay. So it is white coat can lead to high blood pressure. And that's not your true blood pressure. So I insist that it should be resting blood pressure. And a masked hypertension is when a person goes to a doctor, it is well controlled. But when it is high because of various reasons, that stresses at home, or the assurance is not there because he's tired through the day, or his blood pressure medicine doesn't cover him 24 hours. So all these reasons lead to about high blood pressure at home and low blood pressure or normal blood pressure at the doctor's clinic. So both have their own implication. The white masked hypertension is undertreated by the doctor because the doctor feels it is well controlled. So it doesn't increase the medication. And white coat is overtreated because the doctor feels that the pressure is high and the medicines are increased. So both can be unmasked or black and white made by using a home measurement of blood pressure. And that's why the home monitoring is now important. Suppose we have a home monitoring on y-axis and the office blood pressure, the doctor's clinic blood pressure is in the x-axis. If you have high office blood pressure and low home monitoring, then you have a white coat hypertension. If you have a high home blood pressure and low clinic blood pressure, you have a masked hypertension. If you both are high, it is uncontrolled blood pressure. And if both are normal, that means you have controlled normal blood pressure. So you have to find out where you fit in and accordingly try to get into the left-hand bottom, wherein both your blood pressures are well controlled. And they have implication. For example, I'm sure I'll going to make it very simple by some hand holding. The best is here when you are controlled, and the worst is where you are, where uncontrolled. Masked is worse, and white coat is also bad. So they are in between the two. So the new concepts, what we are given by the European Society is more and more office blood pressure measurement is gone. More and more ambulatory blood pressure, that means 24-hour blood pressure, or home blood pressure monitoring is encouraged these days. It is the HBPM which tells the real story of your blood pressure and your future dealings with the blood pressure or pressure complications related to your blood pressure. Obvious advantages of home blood pressure monitoring are, it gives you a trend. Suppose you visit the doctor after 3 months. The doctor will get a trend of how you were in the last 3 months. Masked and white coat hypertension would be unearthed by doing good home blood pressure monitoring. The patient participation improves, and that's why it's a much better monitored blood pressure. The real predictor of future events is home blood pressure monitoring. So it is important to get it. And actually, it's like a new life skill. Nowadays, as I said, you must know how to check your glucose. You have to know how to do a CPR for a person who is collapsed. Similarly, you have to know how to measure blood pressure at home. However, it has a caveat. The red letters tell us that it can become a headache to the doctors and the patient and the family, because there are personalities who do it 3 times a day, 4 times a day, fluctuation that itself increases their blood pressure. So you have to avoid all this. Use technology to your advantage. Keep it once a week, and that's it. Beyond that, don't try to measure blood pressure too often. Because all of us fluctuate. Like this is a normal person's curve. Almost 15 to 20% dip occurs at night. And then early morning when we wake up, first 2 hours is the highest blood pressure reading. So a normal person would move like this. There are going to be fluctuations in all of us. And the others are complicated ones. I'm not going to discuss that. This slide is to emphasize to you that all of us fluctuate during the day. So it is normal to have some fluctuations or the other. So the International Society, which treats hypertension and guides us,
tells us that we have to control the blood pressure in a triad. Triad means ensure that all 24 hours blood pressure is below 130/85. Whatever is a circadian rhythm, that means slow, little lower at night, should be maintained even by your medication. And the BP should not fluctuate too much. There should be a smoothness of that. If you manage all three by your methods and by medication, then your cardiovascular protection is the best. Your HMOD is the least. And that is what we aim at. We just don't want to have the numbers, that is not just the quality of blood pressure, but the quantity also, by 24-hour control, less fluctuations and dipping at night. So we know that somebody who is good at batting, bowling, and fielding is what is required for T20 matches. Then you become a star performer. So anybody who has high blood pressure, the doctor treats him such a way that all three aspects are taken care of, quality and quantity. Then that is the best method, best way to treat high blood pressure and prevent complications thereof. There are obviously lifestyle changes for hypertension before medication start. They are salt below 6 grams per day. 6 grams is 1 teaspoonful filled flat will come to about 6 grams of salt. Average Indian consumes about 13 grams of salt. So we have to be aware of our salt intake in the pickles, papads, and the wafers and the namkeens that we eat, and also the salt that we put in our cooking. DASH diet is actually more of uncooked food, less of cooked food. About 150 minutes of aerobic exercises per week. That means 30 minutes, 5 sessions. Yoga meditation is exceptionally important for high blood pressure, because there is a lot of mind element in blood pressure. And if you are obese, then reduction of 10% of your original weight you have to do. Then you can get rid of 1 tablet also if you do that very well. And of course, practice home blood pressure monitoring. Listening, I think it becomes important, listening to the doctor by the patient and listening to the patient by doctor. All this is getting less and less, but it should be practiced in our day-to-day life. Another important peculiarity of Indians is a large study of only almost 19,000 patients. The average heart rate of an Indian comes to 80 beats per minute. See, we are on the average higher emotional people. So in Japan, it would be about 65. In Finland, it will be 68. So we have a high blood pressure, indicating that we have that stress levels which are higher. Ours is a developing country, so it's going to happen. But that's why yoga, meditation, and some drugs which control this rate also become important. So all the blood pressure medicines are not the same. What to use to whom, heart combination, what to combine, leave it to the doctor. Don't delve too much into it. You do your part very well of the lifestyle change and the home blood pressure monitoring. Nowadays, we use combination pills because obviously it adds to a lot of convenience. 3 pills put together. We can give less number of pills and bring in friendliness to the prescription. If we write a prescription with 6 tablets for blood pressure, obviously the patient going to miss or not going to use it or feeling wary about it or complain about the cost of the treatment. So we have to write prescriptions which are pocket friendly, effective, and also compliance related. Because if you ensure that 80% of the time blood pressure medicine is taken, then your risk of heart attack is less than 50% as compared to a person who is not taking the medicines very well. So very startling slide. So I thought I would be able to explain that risk involved to you. So there are additional medication for high blood pressure individuals. There'll be some cholesterol medicine for few, blood thinner medicine for you. Please leave it to the doctors to decide that. Beware of painkillers. They are usual painkiller, not good for blood pressure. And many patients are given a alpha blocker at night for frequent urination of night. That can drop your blood pressure. So please be aware and inform the doctor if you're already taking these medicines. There would be additional medicine for diabetes, coronary artery disease. This, I said in the beginning, it's a high DALI disease. So there could be a depression related to disease itself, which needs to be recognized. And in very, very obese patient, a bariatric surgery, the weight reduction surgery, can be advised to get rid of or to control the blood pressure much better. So the strategy for hypertension in 2022 is first of all, do good lifestyle modification. Use the standardized method that we discussed
sit in front of a table, place your feet on the ground, arm on the table. It's a bare arm without a cloth. Rest your back on the chair. Cuff should be on for at least 60 seconds before the machine is started. Home blood pressure monitoring every week would be important for such an individual. Minimum number of tablets, aim of blood pressure below 135/85 in most individual. Manage your weights, sugars, cholesterol, and stress equally well other than the blood pressure. So you have quality of control and quantity of control of blood pressure. And these are two new methods, renal denervation and hypertension vaccine, which are for the future, may be coming for management. So you think this is a cool place? It is not. It's exceptionally hot desert. So there can be stark disparity in what we practice and what is told to the patient. But if we all accept everything that is presented as true and really true, there would be little hope for advance. So we'll keep advancing. We'll keep updating ourselves as time goes by. Maybe if I'm invited next year, I shall give you a different story of hypertension. But as of today, this holds true. I shall stop here and we can go for the questions. Thank you. Thank you, Dr. Jagdish Hiremath. I think it is a wonderful and simple presentation rather for the public. My first question is, somebody has asked, what is ambulatory blood pressure monitoring and how is it done? ABPM, ambulatory, I just alluded to it briefly. It's actually started off as a research tool. Suppose you have a new blood pressure medication, then how do you know that it is having effect or not? So we would put patient on a 24-hour ambulatory blood pressure. That means the machine is sort of tied to the patient. It is hanging on his body wall. It is tied to the abdominal wall. And the person moves around with the machine, goes to the office, goes for a walk. And even during sleep, in those 24 hours, about 60 to 70 times blood pressure is measured. So it gives you a 24-hour record of the blood pressure. And of course, it can be used for measuring how the blood pressure dips at night or whether your medication is working on you or not. You have some palpitation at night, whether it is related to high blood pressure or not. So all these things which happen outside the doctor's clinic can be well diagnosed by ambulatory blood pressure monitoring. It is all used everywhere in the world. It is very well used in India as well. Compared to home BP is a little different because home BP is over a period of time, it will give you a measurement. 24-hour will be only those 24 hours. So it will have a different connotation. Yeah, the next question is, there are so many of these BP monitoring systems in the market. So what should one look for if he or she has to buy an instrument and monitor blood pressure at home? As I said, don't be wary of the electronic equipment. They are wonderful. They are accurate. This is an electronic era. So go for any standard company, look at its credentials. If it is internationally acclaimed, well and good. I don't want to obviously name any company. But whatever equipment you buy, go to a doctor who is friendly to you and get it checked. What is your instrument giving a measurement and what is the doctor's reading? And if they are reasonably matching, that is the instrument for you. And as I said, the method is more important rather than the machine. What exactly is low BP and is it as dangerous as high BP? Low BP actually is a serious disease. When the patient is unwell in the ICU, that is the time hypotension takes place. It's a medical emergency. So whatever we always think, mere ko low BP ho gaya, is a very transient event. Maybe you are not eaten well, you are not slept well, you are not had enough, or you had diarrhea, dysentery, you are dehydrated, or your blood pressure medicine is taken and other things are not done. So that's the time when the BP drops. That can give you a dizzy feeling. It can give you a little graying in front of your eyes, especially when you change posture from horizontal to vertical, it will do that. But as I said, it is not a disease. It is a condition created by the treatment or other conditions which are happening. So if somebody has a blood pressure normally as 100/70 and the person is up and about, moving around, doing normal things, then it's just like somebody is short and normal. So unfortunately, there's nothing like tall and normal in blood pressure, but short and normal is perfectly acceptable. Fine.
Now, you in one of your slides, you showed that there must be lifestyle modifications. So what do you suggest as lifestyle modification, especially people who work in the IT field, they sit in front of a computer for a long time? Exactly. I alluded to that in the slide, but maybe a little explanation here is sedentariness has to be avoided. See, look at Indian housewives. They are all the time on the move, and so many of them are fitter than men because they are moving all the time using their leg muscles, which are the biggest muscles of the body. For all IT sector people, I would say use standing workstations. That will help you because standing means you're using your leg muscle. Second thing that can be done is every half an hour, walk 10 steps. Not possible. Every 1 hour, walk 20 steps. You keep doing that throughout the day. Use your leg muscles, move around in the office. It will help you a lot. In addition to this, if you could do about 30 minutes on 5 days of the week walking, it will be excellent aerobic exercise for you. That is the exercise part. Yoga meditation, if it is added to this, it will be really, really wonderful. Other part of the lifestyle is actually most of the diseases really start in the diet pattern. So improve your diet. It is absolutely possible to do it whether you are in IT or not, whether you're busy or not. All that you have to is 3 major meals, in between very little or no snacking, avoid excess tea or coffee, avoid these stimulations, avoid salty items, especially for blood pressure, and stick to eating for the body, not for the tongue. I always keep saying that we eat 3 times a day, that is 100 times in a month. Out of that, 90 times you eat for the body. 10 times you allow some cheating, a party or some function or a marriage, it's allowed. But most of the time, if you get control of your diet, probably you have done yourself enough justice. And of course, lifestyle will include diet, exercise, stress management. It's a different topic by itself. Each one has to sort out for himself. But yoga, meditation, and other aspects, which are hobbies, having good family, friends, all these things help a lot in it. And the last part is, of course, weight control. If you lose your weight, if you are obese, then it will help you reduce your blood pressure and also get rid of your tablets. In one of your slides, you also showed that BP fluctuates during the night. Why is that happening? Because at night, during sleep, the whole system sort of drops down. So the stimulants are not there, which are required during the day. So there is almost, let's say, about 10 to 20% drop of blood pressure during the night. It is called dipping, as the lights of the car dip. So the BP also dips during the night. And it's a very natural physiological phenomena to have a lower blood pressure at night. Now, what is the link between high BP and cardiovascular disease? How is it linked? It's a major link. It is called as a major risk factor for cardiac disease. So other risk factors, I'll just enumerate and then go on to blood pressure again. Diabetes, high cholesterol, tobacco in any form, mental stresses, family history. So many these things are very well known. And high blood pressure, of course, is the chief culprit of cardiovascular disease. High blood pressure uncontrolled for a longer time, which will lead to atherosclerosis, that is blockages in the arteries. In the heart, it causes heart attack. In the brain, it causes paralysis. In the major arteries of the aorta, it will cause ballooning of the aorta called aneurysm. And it can cause a lot of other cardiovascular illnesses. So, and it's a very simple step of controlling blood pressure. And control of blood pressure is remarkably effective in preventing this. Control of diabetes may not be, but control of blood pressure certainly prevents you from getting into cardiovascular complications. What is the link between blood pressure and pregnancy? There is a clear link that is called as a pregnancy-induced hypertension, PIH. Now, some of the ladies, let's say about 10% of the pregnancies, all pregnancies can develop pregnancy-induced hypertension, PIH. They are managed by the gynecologist. It's a separate entity treated by the gynecologist. But general population, the role starts after that. Once the baby is delivered, everyone is happy, hunky-dory, and the mother is always neglected.
Mother is young in her youthful days, so she goes around her business like nothing happened before, and her blood pressure never gets checked for the next coming years. 10% of those who have PIH can continue to remain hypertensive in the latter years. And suddenly at the age of 35, 36, the lady comes to us with a complication of hypertension because she is hypertensive for the last 7-8 years and it was never got checked at all. So all those who develop PIH must keep checking their blood pressure even after the baby is delivered is one. And during pregnancy, the treatment of the blood pressure is a special issue, probably outside the purview of this talk, but it is well taken care of. The drugs that are used normally are not safe for the baby, so they are not used, special drugs are used. But let's leave it that as item which can be discussed in more technical fora. Yeah, it's often said that, hypertension is the key, as you mentioned, hypertension is the key risk factor for cardiovascular disease. Currently, around a third of people with hypertension are undiagnosed. Yes. And those diagnosed, around half of them do not take antihypertensive medications. True. The World Health Organization estimates that high blood pressure directly or indirectly causes death of at least 9 million people globally every year. Yet hypertension is often neglected. Why? Because the lack of awareness. Actually, it is something which doesn't cause symptoms always. So many of them are moving around with a blood pressure of 150/90, but they are not. They don't realize it, and that's why they don't go to a doctor. It is home blood pressure monitoring is not a fashion yet, so we don't do it in every individual at home. Young people, we feel nothing will go wrong, so we don't check their blood pressures. But only awareness and awareness and awareness will bring us to this. It's not getting scared of anything. It's like आंखों में नंबर है तो वो 4 साल के बच्चों में तो वो भी हम पहनते हैं चश्मा और उसको चेक कराते हैं. Similarly, we have to keep checking on blood pressure and working on it. But it is, as you said, largely neglected, basically because one thinks मुझे नहीं होगा, मुझे क्यों होगा, or that kind of a feeling. Now, in the first report on pediatric hypertension by the National Heart, Lung and Blood Institute, published in 1977, declared the detection and management of hypertension in children and the precursor of hypertension in adults are the next major factors. The report also recommended that annual BV measurement in all children about 3 years. Unfortunately, so many years later, the diagnosis of hypertension is missed in majority of the cases, and familiarity with pediatric hypertension among clinicians is extremely poor. Your comments? Very true. I fully agree with this, and nothing to cast any aspersions on the clinicians or managing babies. But just like their examination involves checking of the eyes for jaundice and tongue for the other aspects and nails they look at, the clinical examination at least once in a year must include a blood pressure, and the cuff, that is arm size required for the cuff, has to be smaller in pediatric age group. But it has to be a norm for pediatric age group. Suppose once a baby is following with a pediatrician, once a year with a blood pressure record, if it is normal, then maybe you can record it less frequently. But if it abnormality is found, it must be chased. So the next question is something that came up in our earlier Health4All debates. But there seems to be no definite recommendation regarding BP modulation in arterial ischemic stroke patients. But BP should be lowered rapidly in patients with intracerebral hemorrhage. What is the current protocol, especially with regard to AIS? It's too technical. It's a technical process, yeah, but we had discussed this. Yeah. But I'll give you just one line, the principle of it. But actually on a patient, it will be done in ICU. So people at large don't have to know this really. But if the blood pressure is 200 and the person is suffering from a stroke of some kind, rapid lowering also has a problem, and keeping it high also has a problem. So the key is to lower it quickly enough and to the range of about 170 systolic, not lower than that. So that both ways the brain remains protected. You had mentioned that BP is quite prevalent in urban areas, understandable, and it is also catching up in rural areas. Why is that happening? Is it because of lifestyle changes, or is it because of any other factor?
Yeah, it is related to urbanization of the rural areas, and the stresses in rural areas are different. They may not be urban stresses, but their stresses of various levels exist. And also I made a mention that it would be just a statistical bias, that it was a recorded less number of rural patients. But I travel the breadth and width of the nation, smaller areas, villages. I feel that every village is now an urbanized small pocket. So that's why it is happening. But it is a reality in rural areas as well. Is there a difference in BP between men and women across in India? Who are the people who are more prone? It's actually the same, no difference between men and women. And guidelines are also the same, whether man or woman should be below 135 systolic, below 85 diastolic. And what about people who are, who do not have access to these things in rural areas? Would this electronic thing help them across? And is it linked to the doctor, to the physicians? No, not really. This kind of a system doesn't exist. But nowadays, even in rural areas, sending some reports on WhatsApp has become so easy. So if somebody has an electronic thing at home, it can be the photograph of the machine can be sent to the doctor is one. But I think more thing is the primary health centers, the nurses in that area, or smaller doctors, family doctors are very much in existence in rural areas. So rather than making it a once a week routine, every time a patient goes for some illness, whether it's cough, cold, it will be a routine thing to measure blood pressure by the doctor at all age groups. Now, is there any geographical spread of BP in India? Some places have more BP, some places have less BP, or is it universally spread across? Almost same. And as I said, most of the times, it all depends on how good is the study done. So I won't delve into that much. Not so important, really. So there is actually, it might be spread across India. Yeah. Now I will go on to another, question, which of course does not have any slight relationship with BP, but your specialty of, interventional cardiology. In developed nations, this is totally different. There is an appropriate criteria whether it is appropriate to do angioplasty or not. And they are mandated that one aspect of physiology should be used to determine whether angioplasty is needed or not. However, I do not know whether there are such criteria as there in India, and often decision rests with the treating doctors. Imaging inside coronary artery is essential to get the best results for angioplasty. It helps to correctly identify the extent of plaque built up, leading to narrowing of blood vessels of heart. Your comments on this? I'll comment, but I feel this question is too technical and irrelevant, really. Okay, it's just like we understand that if there is a fracture on the X-ray, we want to put a plaster. That understanding there for angioplasty also. If the block is in a major artery, and if it is more than 80%, it will need an angioplasty period. You don't have to do anything other aspect. If somebody has had a heart attack, that means the nature has already given us a warning that this person has faced a problem. Of course, he needs angioplasty if the other earlier criteria of more than 75% major arteries fulfilled. Now, the physiological techniques, as they were trying to discuss, only for moderate areas. Suppose somebody has a block which is, say, 60%. A doctor says required, B doctor says required, which is very natural for the doctors also to say that. Then there is a thing called FFR, which is available, fractional flow reserve, and that when actually pinpoint. What happens with the FFR is that it has to be done in the cath lab where we do angioplasty, and it is amounting to almost 60,000 rupees. To make such a diagnosis, to use such an expensive equipment is not worth it. That's why we don't. Imaging, as it was mentioned later on, is important in angioplasty. It is used in very special areas. Simple, straightforward angioplasty, 90% of the time imaging will not be required. But there are areas where it is required. It does make a difference in the quality of the angioplasty. But again, imaging means another 75,000, 80,000 rupees. So all this is linked to cost.
Angioplasty is very effective, very simple, and it can be used scientifically in 90% of the patients. Remaining 10%, there is always going to be some discussion or the other, which is all right. Yeah, then I'll come to a more simpler question. Now, we have been mentioning that BP is quite often undiagnosed or it's neglected. Are there typical symptoms that a person can look for which indicate that you are hypertensive? Yeah, I usually avoid this answer because after this talk, at least half of the people start getting those symptoms. So, but anyway, if somebody has high blood pressure, the commonest symptom you would get is heaviness in the head. That is the most dizziness or heaviness in the head. It is headache can be complained. It is typically at the back of the head between the 2 ears at the back side. That headache is typically of high blood pressure. Then, of course, people can start getting breathless, and more advanced stages can get chest pain. They can get swelling on the feet. But presenting OPD symptom is usually here heaviness ahead, back of the neck, and of course, breathlessness on exertion. And do you subscribe to the view that you have type A personalities, type B personalities, type C personalities, and that type A personalities are more prone to blood pressure? True. Type A are the aggressive ones, ambitious ones, the perfectionist ones. They are the ones who are more prone to develop blood pressure because their sympathetic nervous system is overactive. So the trigger is fast. That means if there is a situation, they would overreact or react more aggressively to the situation. And over a period of time, this trigger leads to high blood pressure. In them, it is much more, definitely. So adding to this, does stress cause hypertension or hypertension cause stress? Stress causes hypertension, definitely. That is the main cause that leads to hypertension. And then I mentioned in my slide, living with hypertension can lead to stress and depression. That's a different entity altogether. But cause of hypertension, etiology of hypertension is stress. Now my co-host Kishore Malviya would like to ask you one question. Of course, in Hindi, you can answer either. Yeah. No, I'll answer in Hindi. Yeah. Kishore. Namaste. थैंक यू सर. नमस्कार डॉक्टर साहब. आपने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा बताया कि घर पे हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं बीपी को. एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है और मैं भी महसूस करता हूं कि जो घर में हम मॉनिटर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मॉनिटर करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा नहीं है. लोग मैनुअल तरीके पे आज भी ज्यादा भरोसा करते हैं और दोनों के रिजल्ट में भी बहुत फर्क आता है. दोनों में ज्यादा क्रेडिबल कौन सा है और क्या हम जो घर में मॉनिटर करते हैं, नॉट मर्करी वन, क्या ये ज्यादा क्रेडिबल है? ये नोशन चेंज करने के लिए ही ये टॉक है शायद, कि होम ब्लड प्रेशर का इम्पोर्टेंस बताने के लिए ही ये टॉक है. मैंने बताया कि अभी हम लोग मेरे को ऑलमोस्ट 8 years से मैं मर्क्यूरी इस्तेमाल करना छोड़ ही दिए हैं. मर्क्यूरी इज बैंड फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड ओवरऑल यूज. सो ऑल द इक्विपमेंट आपके पास जो है वो इधर वो डायल टाइप रहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्लोली अभी ज्यादा ही एक्यूरेट हो गए हैं. फिर मेथड अच्छा फॉलो करेंगे तो आपका होम बीपी और डॉक्टर्स के पास का बीपी इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा. इज बेस्ट वे टू, आपने अगर बीपी मशीन खरीदा तो डॉक्टर के पास जाके आप एक मेथड से चेक करा लो और दोनों में क्या फर्क है, या अगर फर्क है तो क्यों है, मेथड गलत हो रहा है, क्या कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड है, ये चेक कर सकते हैं. बट वंस यू आर श्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट इज रीजनेबली गुड, प्रॉपर मेथड से अगर आप बीपी रीडिंग करेंगे तो इट्स ए वंडरफुल वे ऑफ मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर और कोई उसमें डिस्पैरिटी होने के चांसेस नहीं है. एक हमारे व्यूअर का भी सवाल है सर कि अगर किसी को डायबिटीज है लेकिन हाई बीपी नहीं है और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है, क्या आगे चांसेस हैं हाई बीपी होने के, और अगर हैं तो प्रिवेंशन क्या है? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए अगर आपको अभी डायबिटीज है तो. और डायबिटीज कंट्रोल करें या ना करें, ब्लड प्रेशर ये अलग बीमारी है, वो होती है या नहीं होती, इट ऑल डिपेंड्स ऑन चांस. हाउएवर जो कॉम्बिनेशन है डायबिटीज ब्लड प्रेशर वो कॉमनली देखने को मिलता है. अगर आप डायबिटीज अच्छा कंट्रोल करें और लाइफस्टाइल चेंजेस जो दोनों के लिए ऑलमोस्ट इक्वल है,
करेक्ट डाइट, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, योगा एंड सम मेडिकेशन, तो फिर आप डेफिनेटली ब्लड प्रेशर प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और डायबिटीज भी है तो आपका बीपी कंट्रोल ही आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देने वाला है, ना कि शुगर कंट्रोल. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू. ओवर टू यू मिस्टर शंकर. Dr. Hiramat, for the benefit of our viewers, can you once more repeat how often should one check BP at home using this electronic equipment? I want to repeat the method once and then I'll go. मेथड के लिए रिसेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कुर्सी के सामने, कुर्सी पर बैठिए टेबल के सामने, both feet should be on the ground, not crossed. Back should be rested on the chair. Your arm, tabletop, instrument and heart should be almost at one level. The arm should be bare without any cloth. Tie the cuff, sit in one place for at least 1 minute doing nothing. Then switch the machine on, record the systolic, diastolic and the pulse rate which comes with the instrument. That is the way to record. When you do this, it is a resting blood pressure. इसमें आपने खाना खावा नहीं होना चाहिए, न कि कोई एक्टिविटी, न तो कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए. So on a quiet type, if you record your blood pressure, then that gives you wonderful ways of recording. And how often should they do it? Once a week if you are a high blood pressure individual, once a month in all normal population. And you had also mentioned all age groups. Yeah, and you had also mentioned that the ideal time would be around 3 or 4 on a Sunday when everything is quiet. Correct. Yeah. Thank you very much, Dr. Hirma. I think it was a wonderful talk, very simple for the viewers, and I hope this message spreads across that you should check your BP and not allow it to spread and not say that you didn't know that you had BP. Absolutely. Thank you very much. Wonderful having you with us. Thank you. Thanks for the invite. I feel honored. Thank you. And happy Independence Day ahead of us. We now move on to Health4All, our popular Hindi capsule on various aspects of health, put together by my co-host Kishore Malviya. And this time the topic is monkeypox diagnosis, myths, prevention, treatment, and management. Over to Health4All. नमस्कार. आजकल लोग मंकी पॉक्स से काफी डरे हुए हैं. एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ मंकी पॉक्स का प्रहार. डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसे हल्के में ना लिया जाए. कहां से आई ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण और हम बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे. ये भी कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह होता है. ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है. सबसे अच्छी बात यह है कि मंकी पॉक्स से मौत के आंकड़े लगभग नगण्य हैं. इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप लापरवाही बरतें. आइए सुनते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं मंकी पॉक्स के बारे में. दिल्ली एनसीआर में मंकी पॉक्स का पहला केस डायग्नोज करने वाली डॉक्टर आप हैं. ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं. अपना अनुभव शेयर करिए. क्या लक्षण देखा, कैसे पता चला, शुरू में आपको क्या लगा, बाद में कैसे पता चला ये मंकी पॉक्स है, थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें. पेशेंट जब मेरे पास पहले बार आया था तो पेशेंट को पिछले 2 से 3 दिन से फीवर की हिस्ट्री थी, यानी उसे 2 से 3 दिन से बुखार था. और जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में होता है कि बुखार, सर में दर्द, बॉडी में एक, ये सारी कंप्लेंट्स थी. लेकिन साथ में उसको बॉडी पे कुछ दाने आने शुरू हुए थे. पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि उसे चिकन पॉक्स हो गया है. तो पेशेंट को सिर्फ ये कंफर्म करना था कि क्या मुझे चिकन पॉक्स हो गया है, क्योंकि दाने बिल्कुल भी चिकन पॉक्स जैसे मुझे नहीं लगे थे. क्योंकि मोस्टली जो उसको थोड़े बहुत दाने हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो मैक्यूल्स एंड पेप्यूल्स स्टेज पे ही थे, और वो पाम सोल्स पे थे और जेनिटल्स पे थे. सो क्योंकि फीवर की हिस्ट्री थी तो मे भी मुझे लगा कि चिकन पॉक्स तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ईएम हो सकता है, जो हमें इरिथमा मल्टीफॉर्म में पोस्ट वायरल हो सकता है, क्योंकि अल्सर्स की हिस्ट्री आ रही थी. लेकिन तो पेशेंट को उस टाइम हमने कहा कि नहीं, चिकन पॉक्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ, हथेलियों पे लीजन्स थे एंड इची नहीं थे दाने, बिल्कुल भी पेनफुल थे. सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ईएम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे ट्रीट किया एंड भेजा. 5 डेज के बाद पेशेंट वापस आया हमारे पास, एंड उस टाइम पे पेशेंट के लीजन्स और ज़्यादा पेनफुल हो चुके थे.
लीजन्स का साइज इंक्रीज हो चुका था, ना ईएम में फिट हो रहा था, ना चिकन पॉक्स में फिट हो रहा था। मुझे नहीं, जब मैंने पेशेंट को देखा मुझे लग रहा था मैंने ये डिजीज पहले नहीं देखा है। मतलब आई वांट टू डायग्नोज कि पाम्स एंड सोल्स के लीजन कुछ और डिजीज के हैं, जेनाइटल लीजन किसी और डिजीज के हैं। तो मैं पेशेंट को कहा था कि आप 10 मिनट बैठिए, लेट मी थिंक ओवर इट की व्हाट इट इज। फिर समहाउ आई लुक फॉर इट कि मंकी पॉक्स, क्योंकि देखा नहीं होता है तो कभी पढ़ा नहीं तो देखा नहीं, और देखा नहीं तो समझा नहीं वाली बात हो जाती है। So then I look for the journals कि कैसा है एक्चुअली, is it fitting into it। और एक मेजर बात ये थी कि पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो मंकी पॉक्स फर्स्ट डायग्नोसिस बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया था मेरे। लेकिन क्योंकि पेशेंट जब जिस टाइम सेकेंड टाइम मेरे पास आया था उस टाइम पे पेन था काफी पेशेंट को, और लीजन्स पाम सोल्स पे इंक्रीज हो चुके थे। अब पेशेंट को मैक्यूल, पैक्यूल, पस्ट्यूल एंड अम्बिलिकेटेड लीजन्स भी थे, जेनाइटल पे क्लस्टरिंग ऑफ लीजन्स थी। तो फिर सारा सब मैच हो रहा था कि सब कुछ एक में फिट हो रहा है, अदरवाइज उससे पहले तक ऐसा लग रहा था अलग अलग डिजीजेस में फिट हो रहा है। सो उसके बाद पेशेंट को बोला गया कि देखो, आई डाउटेड दैट इट कैन बी मंकी पॉक्स। पेशेंट पैनिक नहीं किया, पेशेंट को समझाया कि लेट मी लुक फॉर इट कि कैसे सैम्पलिंग होगी, कहाँ भेजना है। पेशेंट से पूछा तो उसने कहा कि क्योंकि कोविड ने हमें समझा दिया था कि जब भी बुखार हो तो आइसोलेट कर लेना है, तो आई एम ऑलरेडी आइसोलेटेड, मेरे घर में मैं अलग कमरे में रह रहा हूँ। तो दैट वाज अ रिलीफ कि पेशेंट ऑलरेडी आइसोलेटेड था। फिर मैंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि आई एम सस्पेक्टिंग अ केस ऑफ मंकी पॉक्स। उसके बाद अथॉरिटीज टुक एन एक्शन एंड उन्होंने LNJP ट्रांसफर किया पेशेंट को, वहाँ पे उसके सैम्पलिंग हुई और देन इट वाज डायग्नोस्ड। आपने चिकन पॉक्स का जिक्र किया तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये चिकन पॉक्स जैसा ही है या चिकन पॉक्स ही है, शुरू में ऐसा लगता है। क्या सिमिलरिटी है दोनों के सिम्टम्स में, दोनों के तरीके में क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है? आम आदमी कैसे समझे कि ये चिकन पॉक्स नहीं मंकी पॉक्स है? देखिए, मैं कहूँगी कि आम आदमी के लिए कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स सिमिलर भी हैं और डिसिमिलर भी हैं। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। सिमिलरली जैसे पहले फीवर आता है, किसी भी वायरल डिजीज की आम निशानियां होती हैं कि फीवर आना, बॉडी एक होना, मसल एक होना, गले में खराश होना। ये सारे के बाद 2 से 3 दिन के बाद स्किन पे रैशेज आते हैं जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पानी वाले दाने, पस्ट्यूल्स या मैक्यूल्स, इस तरह से। चिकन पॉक्स में जो दाने होते हैं वो सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, यानी कि पहले ट्रंक पे आते हैं, यानी कि आपका बॉडी का आगे फ्रंट बैक इस पे आते हैं और फिर मुंह की तरफ, बाजू की तरफ फैलते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो मंकी पॉक्स के दाने होते हैं वो पहले फेस पे, पाम सोल्स, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। चिकन पॉक्स ज्यादातर 7 से 10 दिन में ठीक होने तक आ जाता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है चिकन पॉक्स का जो। लेकिन मंकी पॉक्स लंबे समय तक रहता है। चिकन पॉक्स में दाने जो होते हैं वो मोस्टली इची होते हैं, यानी कि उसमें खुजली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रादर की मंकी पॉक्स में ये दाने का साइज एक तो बड़ा है और दूसरा ये पेनफुल होते हैं। ठीक होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, 2 से 3 हफ्तों में जाके पूरे दाने ठीक होते हैं। हमारे देश में इस समय कोविड-19 भी तेजी से फैल रहा है। क्या होगा अगर कोविड-19 और मंकी पॉक्स इन्फेक्शन साथ साथ हो? कोविड-19 और मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का साथ साथ होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि ये वायरस के एक नेचुरल कोर्स और रूटीन होता है कि एक समय पर एक ही वायरस रह सकता है, दूसरा वायरस नहीं आ पाता है। और अगर इन केस अगर नेचुरल थ्योरी से हटके ऐसा कोई केस आ भी गया तो उसमें मंकी पॉक्स क्योंकि इतना जानलेवा नहीं है, लेकिन कोविड-19 से हो सकता है कि इंसान की, जो व्यक्ति कोविड-19 इन्फेक्टेड हो गया है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए। जैसा कि देखा गया है कि कोविड-19 के जितने भी स्टडीज और रिसर्च हुए हैं, कोविड-19 से टी सेल्स डिप्रेस हो जाते हैं, इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि मंकी पॉक्स की जो रैशेज हैं वो ज्यादा तेजी से फैले या उसमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो। और साथ में क्योंकि कोविड-19 का तो हमारे लंग्स को, जो पेशेंट के लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, उसमें सेकेंडरी मंकी पॉक्स अगर साथ में जुड़ जाता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि ऐसे में मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएं। बट ये अभी तक ऐसा कोई केस ना पाया गया है और इसके होने की संभावना काफी कम है कि दोनों केसेस एक ही व्यक्ति में पाए जाएं।
एक बात और कही जा रही है कि जिसे बचपन में स्मॉल पॉक्स हुआ है उसे चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है। ये मिथ है या इसमें सच्चाई है? नहीं, ये बात कही जा रही है कि जिसको बचपन में स्मॉल पॉक्स हुआ है या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है उसको मॉन्की पॉक्स का खतरा कम है, क्योंकि मॉन्की पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स की फैमिली को ही बिलोंग करता है। और ये माना जा रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स की वजह से इम्यूनिटी है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से आई हो या इम्यूनाइजेशन से आई हो, उसके बाद थोड़ी सी क्रॉस इम्यूनिटी मॉन्की पॉक्स वायरस के लिए भी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको वैक्सीन लगी है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन स्मॉल पॉक्स का हुआ है उनको मॉन्की पॉक्स होने का खतरा बिल्कुल जीरो है। खतरा तो है, लेकिन उस केस में डिजीज की सिवियरिटी होने के चांसेस बहुत कम है। आपने कहा कि होमोसेक्सुअल्स में ये ज्यादा फैलता है, क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? नहीं तो क्या वजह है कि ये होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा फैलता है? देखिए, उसमें ऐसा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही है, एयरबॉर्न डिजीज भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड से फैलता है। उसके अलावा अगर इवन सेमन से भी कुछ हद तक डिटेक्ट किया गया है कि सेमन के अंदर भी ये वायरस पाया जाता है, जिससे कि इसकी ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाती है। सो बाकी और बहुत से वो हैं जो इसके वेक्टर्स हैं, जैसे स्क्विरल्स है या अपना जंगल में रहने वाले मंकीज हैं, इवन टू सम एक्सटेंट रैट से और डॉग से भी फैलने की संभावना हो जाती है इस वायरस की। लैंसेट मैगजीन ने कहा है कि वीमेन आर नॉट इम्यून टू मंकी पॉक्स। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि प्रेग्नेंट औरतें जो है ज्यादा वल्नरेबल है मंकी पॉक्स के। क्या स्थिति है महिलाओं के को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है और थोड़ा सा भ्रम भी, कंफ्यूजन भी है, क्या स्थिति है? देखिए, मंकी पॉक्स का ऐसे कुछ फिक्स डाटा नहीं है कि मेल्स में ज्यादा इन्फेक्ट करता है, फीमेल्स में कम इन्फेक्ट करता है। बट जैसे आपने बोला, प्रेगनेंसी में डेफिनेटली इम्यूनिटी कम हो जाती है, सो एनी वायरल इन्फेक्शंस कैन फ्लेयर अप, सो वो एक मेजर कारण है। प्लस लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग लाइफस्टाइल, बिकॉज काफी हद तक लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। जैसे ये देखा गया है कि होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा पाया जाता है, जिनको इम्यूनिटी कम होती है, HIV के रोगी हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसे लोगों में इसकी मंकी पॉक्स को कैच करने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। कई देशों में ये पाया गया है कि मंकी पॉक्स से जो मौत हुई है वो दरअसल एन्सेफ्लाइटिस से जुड़ा मामला। क्या संबंध है दोनों? फीवर, चिल्स के साथ में बॉडी एक होना, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, रैशेस, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बट अगर ये सीवियर हो जाता है, इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन, एंड मोस्ट कॉमनली जो अभी डेथ हुई, इनफैक्ट इंडिया में भी जो डेथ हुई है वो एनकेफेलाइटिस की वजह से हुई है। सो दिस इज अ सीवियर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मंकी पॉक्स। मोस्ट डिजीजेस आर माइल्ड डिजीजेस और मॉडरेट डिजीजेस। बहुत कम लोगों में ये सीवियर इलनेस हो सकता है, और जिन लोगों में होता है उन लोगों में बेसिकली ये रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, बहुत एल्डरली पेशेंट्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन बहुत जो है, इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हमें ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि हमने कोविड-19 में भी देखा कि कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें कि चांसेस इन्फेक्शन के सीवियर होने के ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से मंकी पॉक्स में भी देयर इज अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु आर एट अ हायर रिस्क फॉर सीवियर डिजीज। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ माइल्ड इलनेस। एंड अगेन थोड़ा सा डिफरेंस है कोविड-19 में, बिकॉज कोविड-19 usually, as we know, droplet या फिर sometimes there is also airborne transmission, close gathering, जैसे कि डॉक्टर रामनजीत ने बोला। लेकिन मंकी पॉक्स में usually it's by very close contact. Sexual transmission is possible, and a lot of cases have happened in men who are, like in MSM patients. So एयरबोर्न ट्रांसमिशन इतना कॉमन नहीं है, बट अगर मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और कोई एयरबोर्न एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर, जैसे कि कोई ब्रोंकोस्कोपी या कुछ किया जा रहा है, तो उस समय एरोसॉल ज्यादा जनरेट हो सकते हैं, जिससे कि वो ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज क्लोज कॉन्टैक्ट
यूजुअली अगर आप 6 feet के डिस्टेंस में है more than 3 hours, then chances of transmission becomes a little higher. इसके लिए मतलब ये बस ये एंड दूसरा एक और चीज है इसमें कि इन्फेक्शन जो है सिम्टोमेटिक पेशेंट से होता है, अनलाइक कोविड-19 जिसमें कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी ट्रांसमिट कर सकते थे इन्फेक्शन, या फिर इन्फेक्शन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ट्रांसमिट होता था. सो मंकी पॉक्स में यूजुअली ट्रांसमिशन को सिम्टम्स के ऑनसेट के बाद स्टार्ट होता है. तो फिर थोड़ा सा सबको अगर मान लीजिए फीवर आ रहा है तो अगर एहतियात बरतेंगे, आइसोलेट रहेंगे, तो फिर इसके उतने ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होंगे जितना कि कोविड-19 में था. तो आपने सुन लिया डॉक्टरों ने क्या कहा मंकी पॉक्स के बारे में. लापरवाही न बरतें, सावधान रहें, सतर्क रहें और दूसरी तरफ कोरोना से भी बचते रहें, क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं. नमस्कार. Welcome back. We now have a special session on 75 years of India's independence, evolution of healthcare sector. Before that, we have the session intro video. Welcome back. This is the 44th episode of Health4All, and we are live on Facebook and YouTube. To speak on 75 years of independence, evolution of healthcare sector, we have with us Padma Shri awardee, Dr. Chandrakant S. Pandau, who is a former professor and head of department, Center for Community Medicine at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
He is the founder member and regional coordinator for South Asia of the International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders since 1985. He was former president of Indian Association of Preventive and Social Medicine. Dr. Padma has been working in the areas of iodine deficiency disorders, micronutrients, health system research, health economics, health policy, health programmed evaluation, public-private partnership, and human rights issues. He's a co-editor of 14 books on health sciences and authored more than 366 papers published in various national and international journals. Welcome, Dr. Padma, and in advance, a very happy Independence Day. It's wonderful always having you with us for a perspective of India's journey through 75 years. And I hand over this platform to Kishore for his first round of questions. Thank you, sir. नमस्कार पद्मश्री डॉक्टर पांडव, आज के गेटअप में आप बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी लग रहे हैं और यंगर भी लग रहे हैं। सही मायने में जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने लड़ाई की थी वही जवान लग रहे हैं। बधाई बहुत बहुत डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने तो पुराना समय भी देखा, नया समय भी आप देख रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में 75 साल में क्या बदला? नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे 3 गुरु है यहाँ पे, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर किशोर मालवीय, डॉक्टर शंकर। आजकल एक बहुत पॉपुलर भजन चल रहा है, हर हर शिव, आपने सुना होगा। शिव शिव शंभू। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 75 के इंडिपेंडेंस डे पे बधाई। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। दिस अ वेरी मूविंग वीडियो, यू मस्ट हैव सीन इट। स्कूल में एक बच्चे को पूछा कि तिरंगा में कितने रंग होते हैं, तो सभी ने बोला 3 रंग है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बच्चा था, उसने बोला इसमें 5 रंग। आपने देखा होगा किशोर जी। जी। तो कौन से 5 रंग है? तिरंगा के 3 रंग तो है, देख रहे हैं ना 3 रंग जी। उसने बोला 5वां रंग नीला है। इस चक्र को भूल जाते हैं, अशोक चक्र, उसको हम भूल जाते हैं। चौथा, और उसको पूछा गया 5वां रंग कौन सा है? उसने बोला जब मेरे पिताजी फौज में थे, जब वो घर आए, उनके ऊपर तिरंगा रखा गया, 5वां रंग उनके खून का था, खून का। वेरी मूविंग स्टोरी। 5वां रंग मेरे पिता के। तो सभी लोग घुट फुट के रोते, शिक्षक, सारे विद्यार्थी, they were all crying. So I have 15, I'll answer your question, but before that, I want to express my gratitude to the freedom fighters. The first war of independence was 1857. First war of independence. Tatya Tope, Rani Lakshmibai were very active in that. 1857. I also want to give my gratitude and remember Shahid Bhagat Singh, Rajguru, or Sukhdev. They were young people. At the age of 24 years, they sacrificed their life for the country's freedom. Then comes a very giant figure, Mahatma Gandhi. He had important 5 satyagrahas in his life. First was the Champaran, second was Dalit, third was Namaka Satyagraha, fourth was the Quit India movement, and fifth was the last one at 3 January March. So I want to pay gratitude to that. I also want to express gratitude, which I do at Kishorji and Shankarji and Pradeep, to my Corona warriors. Corona warriors. They sacrificed their life for the health and well-being of all of us. First wave, Kishore, 700 doctors, 700 plus doctors died. Second wave, 750 plus died. So gratitude to the doctors, the nurses, the ward boys, the embassy, the ambulance, and everybody's staff and security. I was watching the episode on monkeypox and chickenpox.
That's the future challenge. We'll have to live with these pandemics. I'll come to that later. Now, your question of 75 years, what is the change that has placed? I'll give you the statistics to tell you what has changed in the last 75 years. Very important statistics. I'll just give it to them, Kishore. Kishore ji, आपको हम बताएंगे statistics. Yes. Just give me a minute. After 47, there's a tremendous progress in health sector, tremendous. The death rate in 1951 was 27 per thousand population. 51 is 27. Now in how much it is, Kishore? It's 9. From 1950-51, from 27 to in 2000, we have come to 9 as a crude death rate. Infant mortality rate in 1951 was 183. Now it is 70. From 183 to 70. The life expectancy in 1951 was 33 years. 33 crore devte, 33. Now it is 64 years. The birth rate in 1951 was 40 per thousand. Now it is 26, as per the statistics of 2000. The hospital beds in 1950-51 were only 3. Now we have 9, 3 times. The doctors in 50-51 were 50,000. Now, if you include the Ayush, we have 7 lakhs plus doctors in the country. Number of hospital dispensaries increased 7 times. And primary health centers, there were 725 in 50-51. Now we have 22,500. Paramedical workers have increased tremendously. Population in 1951 was 36 crores. Now we are 140 crores. Literacy rate was 18%. Now we reached a very high literacy rate. So there is a very dramatic improvement in the last 75 years in the indicators that I've talked to you. Very dramatic, very dramatic. Kishore ji, that answers your question about the statistics. जी सर, जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा. आपने बिल्कुल सही बताया, आंकड़ों के साथ बताया कि हम हेल्थ सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं 75 साल में. सर, एक सवाल मन में उठता है, ये आपसे पूछना बेहतर होगा कि हम सुनते हैं कि कभी भी कोई बड़ा आदमी, वीआईपी, पैसे वाला जब बीमार होता है या ज्यादा बीमार होता है तो सीधा विदेश जाता है. क्या विदेश का हेल्थ केयर सिस्टम हमसे बेहतर है या हमें अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है? Actually, I have great pride in the Indian system. Very great pride. बाहर जाने का कोई मकसद नहीं है. It has become a fashion. It has become a social talk. Today, in India, we can do any surgery, any operation, any diagnosis. In fact, we have the strength of Ayush, which no other country has it. Ayurveda, Yoga, Siddha, Unani, होम्योपैथी, बाकी कोई देश में नहीं है इतने जो हिंदुस्तान में आयुष का कार्यक्रम किया. And most important, Kishore, we talk of health and wellness. Your program is health and wellness. And there is a dramatic difference in the definition of health and wellness. Health is physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or inflammation. Wellness has 8 dimensions of health: physical, mental, social, emotional, spiritual, economic, environmental. 8 dimensions of health and wellness. I must congratulate Swadeep and हमने आपको गुरु बोला है तीनों को for starting this channel on health and wellness. Mahatma Gandhi said, health is wealth, not pieces of gold and silver. So we have state-of-the-art technology. India's first heart transplant was done at the All India Institute of Medical Sciences in 1993 by Professor Venugopal. कौन सी चीज है? Jaipur food. We name any surgery. In fact, today, a lot of countries from abroad are coming to India. Medical tourism has become an important dimension of our healthcare services. हम अपने लोगों के लिए भी आगे बढ़े हैं. Health, there are 18,000 health and wellness, 26,000 health and wellness centers that have been established. So we are growing both internally as well as externally. तो बाहर जाना तो फैशन हो गया है, फैशन.
सबसे पहले तो सर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं और ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि असल में गुरु तो आप हैं हमारे, और हम आपके बहुत श्रद्धा करते हैं, आप हमारे गुरु हैं। दूसरा सर सवाल ये है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें कि हम अभी भी पिछड़े हुए और बहुत कुछ करने की जरूरत है? Public health. I'm sorry to say that history repeats itself. When Health Survey and Development report was presented to the Government of India, 1947, there it was very clearly written by Bore Committee report, 1943 to 46, report written by Sir Joseph Bore. He comes from Maharashtra, नगर से आते हैं वो, मेरे गांव के पास है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्राइमरी हेल्थ केयर के फाउंडेशन प्रिंसिपल उस रिपोर्ट में है। And who took the credit of Alma Ata, 1978? किसने लिया 30 साल के बाद? उसमें सब कुछ लिखा है। And the government of India, I'm sorry to say, has neglected consistently the focus on public health. There has to be Indian Public Health Service. At least COVID-19 से किशोर लोगों को समझ में आया कि पब्लिक हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है। There are two things I want to mention that today even 90% of the budget is given for curative, 90%, and 10% for preventive. And it's not the allocation of budget, Shankar sir, it's the utilization of budget that's important. Allocation to ho jata hai, but how much is the utilization? There is no monitoring in the 5 years of time the government has on utilization. Allocation is the first step. Utilization of the budget should be, I would suggest, after every 6 months, if possible, every 3 months. So that's the difference, allocation and utilization. And they have to establish Indian Public Health Service cadre. It is the need of the hour. जैसे IS है, IFS है, IPS है, उसी तरह से इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की बहुत जरूरी है। सर, आपको लगता नहीं है कि साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च और स्टडीज में थोड़ा और कुछ करने की जरूरत है? Research is an ongoing activity. It's an ongoing activity. As and when the new diseases come, new methods of diagnosis come, new methods of treatment come, we have to do evidence-based research. All our policy decisions have to be taken on evidence-based, not eminence-based, which happened in COVID-19. I want to ask the question to the government of India, who were advisors in COVID-19? You had cardiologists, cardiothoracic surgeons, neonatologists, orthopedic surgeons, orthogynecists. There was not a single person from public health who was guiding the government. ये बहुत जल्दी ब्लंडर हुआ है, मैंने बार-बार बोला है, ये बहुत जबरदस्त ब्लंडर हुआ है. It's a public health problem, and you call the clinicians. They are good in their respect. I have tremendous respect for them. But what do they know about public health? Epidemiology, behavioral sciences, their knowledge is zero. Thank you, Dr. Saab. Over to you, Mr. Shankar. Thank you, Kishore. Namaskar, Dr. Pandav. Wonderful having you. Namaskar. In 70, you have mentioned that one of the pitfalls or one of the drawbacks that we have had is that we didn't have a public health system that should have been there. But in 75 years, if I would ask you, what are the 3 remarkable things that India did in the field of medicine and research? What could you pinpoint? 3 important things. Eradication of smallpox. The program was started in 1962. You had a discussion just before my session on monkeypox and chickenpox. We have managed to eradicate smallpox, so we should be proud of that. And I was one of the person who was an intern posted and actually participated in smallpox eradication program. I was posted in Muzaffar district, where for the first time in the history, the interns were mobilized and posted in each district of India. I work in the worst possible challenging state of Bihar. If we wanted to eradicate smallpox, it had to be eradicated from Bihar. I want to express my gratitude to Dr. Mahendra Datta, who played a very important role in the eradication of smallpox in Bihar and in India subsequently. I also share with you, Shankar, when the smallpox was eradicated in 1977 in India, there was a program held at the All India Institute of Medical Sciences in Jawaharlal Auditorium. Dr. Karan Singh was the Minister of Health and Family Welfare at that time.
he gave a Nataraja to Dr. Hafdan Mahler. That Nataraja figure is still there in WHO headquarters. And I'm very proud that I participated in that activity as a part of the audience. I played an important role. So smallpox eradication, number one. Number two, we made a great progress in polio. Polio is another wonder public health story. Polio. It was a home-to-home massive thing, and I must thank Dr. Harshvardhan for starting it in Delhi. Do bund jindagi ke, do bunda jindagi ke. Massive mobilization in polio. And third, of course, Shankar, my favorite, the ideal man. The ideal man. Today, Shankar, 93% of India's population is consuming adult salt. In 84, it was 5%. Now it's 93%. So it's a tremendous, untold public health story. And this has to be told to people again and again. It's not, I spent my life last 44 years in addressing this particular problem. हम बिल्कुल किशोर अर्जुन पांडव बन गए थे. पक्षी का मुझे सिर्फ दाया आंख दिखाई देती थी और मैंने उसको छोड़ा नहीं, पीछे नहीं. बाकी सब मेरे लिए जिंदगी में. I didn't care for my family. I didn't care for my children. I just focused like Arjun Panda on the right eye and gave my life and dedication to iodine deficiency disorders. On this context, I was recognized by the government of India, giving Padma Shri in 2021. मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को. But I want to dedicate this award to my parents, to my family, to my children, the salt manufacturers, producers, to the public health specialists, behavioral scientists, and all those. It's a teamwork. I'm just only at the front face of that teamwork. So I want to express my gratitude to all of them. Express my gratitude. So these are the three programs we can be proud of. Smallpox eradication, polio, and iodine deficiency disorders. Thank you. That's wonderfully been pointed. I would also like to ask you, Dr. Pandav, that despite 75 years, of course, we now cry over COVID deaths and other things, but we still continue to have deaths due to infectious diseases in rural areas. We have malnutrition rampant. We have tuberculosis. Now, how can we overcome all this, especially in rural areas? Very important question. In fact, the rural areas have been consistently ignored and neglected. You look at the doctor-physician ratio. 70% of doctors are in the urban areas, which has 30% of the population. That has to be reversed. That's number one. Number two, the undernutrition is a major problem in rural areas. And the government of India, I must congratulate Prime Minister Narendra Modi for starting National Nutrition Council, National Nutrition Mission. It was launched in Jhunjhunu in Rajasthan on 8 March 2018, which also happened to be the Women's Day, International Women's Day. So National Nutrition Mission is a very sincere effort to address undernutrition. While talking about undernutrition, Kishorji, I want to warn about overnutrition in cities. Obesity. Obesity has become a very important thing. The fast food and the fashion for the fast food is obesity. That addresses the question of malnutrition. So we have both double burden, undernutrition and overnutrition. That's number one. Number two, in tuberculosis, we have made a great progress. Today, after malaria, we are spending maximum amount of resources for tuberculosis. And the program is taking it very seriously. We have close to about 500 centers for diagnosis of tuberculosis. The most important part in tuberculosis is compliance. Because you have to take medicines for 12 to 18 months. The compliance is very important. Now, there are different strategies that have been evolved for compliance. One is your ASHA workers today. ASHA is there, auxiliary nurse midwife is there. So they have to monitor and count the pills. Count the pills that take it. So it's not a supply program, it is a program of administration. That's the tuberculosis. So these questions, two questions you asked me. Now talking about nutrition, nutrition security is essential but not sufficient.
It starts with agriculture security, starts with food security, then nutrition security. All these three sectors are interlinked. Food security, agriculture security, food security, and nutrition security. इन तीनों को हमको ध्यान देना पड़ेगा. So if I take you across time, say 75 years now, but if you are celebrating today the 100th Independence Day, would be ahead, would you look at India's control of COVID as one of the landmarks? COVID is again a man-made disease. Man-made. Actually, it was the population explosion that forced people to go and cut down the forest. And because of cutting down the forest, it started with Cassandra forest disease in Karnataka. We encroached upon the natural habitat of the viruses, protozoa, fungus, and bacteria. We invaded it. So one important message for us is each one plant a tree. आप झंडा जरूर लहराइए. You please fly the flag. लेकिन उसके साथ आप एक पेड़ भी लगाइए. Today, if you want to bring out the environment thing to its normal thing, we'll have to spend $500 billion. $500 billion. So tree plantation, water conservation is equally an important part of health and non-health determinants. बहुत जरूरी है. Plant a tree. Now, you mentioned that 70% of the doctors work in urban areas and only 30% of the doctors go to rural areas. And there's a lot of reluctance for doctors to go to rural areas. But I would like to point out two states, Tamil Nadu and Kerala, where you have doctors spread out across rural areas. Now, how was this achieved actually? This was achieved by leadership and separate cadre for Indian public health population. Tamil Nadu, I know very well. They have a separate cadre for public health doctors. And that's what whole of India should follow. Have a separate cadre for Indian public health. Kerala historically has a very important role in terms of education and healthcare. Right from the king of Kerala, of Travancore, they had an excellent system of health and education. These two are foundation. And we see the same thing in Sri Lanka. Health and education has to go together. And Kerala and Tamil Nadu. And Tamil Nadu, one thing, Shankar, is very important. They have also actively included Ayush doctors. In fact, for treatment of chickenpox, they got Unani doctors to take care of that. So we have to be broad-minded and inclusive, not exclusive. After all, there is only one system of medicine that reduces your pain and suffering. Homeopathy, naturopathy, allopathy, these are all artificial divisions. And what is lacking in a system is sympathy and empathy. Fine. Now, obviously, you had mentioned that you underwent a lot of sacrifices during the iodine program. Now, can you just recall some of the things, some of your experience in rural areas, especially in Bihar? Bihar, I've been working since 1980. And what I did is I used to stay in that area. For 6 months, I stayed in Bihar. I was eating the locally grown food. And when I used to come to All India Institute to bring my blood samples for T3, T4, and TSH analysis, I used to give my own blood sample. And they found that I had become hypothyroid. Because 6 months I was eating locally grown food. My khud ka hypothyroid ban gaya. That's number one. Number two, very interesting story, Shankar. Very important question you asked. We had started the program on screening for neonatal hypothyroidism. We used to collect cord blood. So I was explaining to the untrained dai that please make sure that when the child is born, you collect the cord blood. You know what that time the mother said? Dr. Pandav, you leave that cord blood stream with me. Because when my child is being born, this dye may not be there. So that also tells the importance of convincing the people and educating them. हमारे लोग बहुत होशियार हैं. What we lack is in communication to them. We do not communicate the message in their language. Their language. That's where social sciences become very important. Behavioral sciences.
anthropology, sociology, economics, political science. These 5 disciplines become very, very important. And they should be part of the medical curriculum. In 2006, as a part of the National Rural Health Mission, I was a member of the Reforms in National Medical Education. Javed Chaudhary was the secretary and I was the member. That report is gathering dust in the ministry. There I have categorically mentioned that introduce behavioral sciences, sociology, economics, anthropology, psychology, and politics. It has to be an integral part of medical curriculum. It's gathering dust. So it's wonderful, actually. An integration of all these systems only will give medicine a complete picture. Otherwise, it will just be a sort of, climbing on just one branch. Kishore, you have any more questions? Yeah. Thank you, Dr. Panda. It was wonderful having you with us. And you are, I should say, an inspiration to many doctors and others, also general public. And we salute you for your wonderful service, especially in the IDN zone. Thank you very much and namaskar. Bharat Mata Ki Jai. Jai. Thank you very much. Yeah. We now move on to the concluding session is on mindful eating. For this, we have Ms. Divya Prakash, an accredited dietitian and nutrition counselor, a wellness therapist, deep sleep mentor, psychological counselor, and blogger. She's also a certified professional trainer and is currently working as a coordinator and wellness expert of an artificial intelligence-based healthcare company headquartered in Australia. So we now move on to an important session on mindful eating, and I hand over this platform to Kishore for his first round of questions. Thank you, sir. Welcome, Divya ji. नमस्ते किशोर जी और इंडिपेंडेंस डे की एडवांस में शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को भी और हमारे सारे व्यूअर्स को 75वें आजादी के महोत्सव, अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्या जी, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है 15 अगस्त से और अब आगे आने वाले समय में फेस्टिवल्स हमारे यहाँ नवरात्रा है, दिवाली है, सब शुरू होने वाला। और इंडिया में फेस्टिवल का मतलब होता है खाना पीना और मस्ती। हाँ जी। तो हम इसको फोकस करते हुए आज कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं माइंडफुल ईटिंग से जुड़ा हुआ। पहला सवाल ये है कि आजकल एक डिबेट चल रहा है, मैंने देखा सोशल मीडिया पे देश के बड़े बड़े डॉक्टर डिबेट कर रहे हैं एडिबल ऑयल के बारे में। हाँ जी। किसी ने लिखा कि कोकोनट ऑयल बहुत खराब होता है हेल्थ के लिए, किसी ने कहा कि ऑलिव ऑयल से भी बहुत फायदा नहीं है, किसी ने कहा कि मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो एक आम लोगों में जब डॉक्टर इस तरह से बटे हुए हैं तो आम लोग तो और भी कंफ्यूज होंगे। कृपया आप हमें बताइए, आप सबसे बेहतर जज हैं इस मामले में, कि कौन सा तेल घर में खाना सबसे अच्छा होता है और कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। किशोर जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो ऑयल एंड फैट है, ये एक सोशल मीडिया पे कौन सा ऑयल खाना चाहिए, ये सिर्फ डिबेटेबल इशू नहीं है। डिबेटेबल इशू ये भी हो गया है कि हमें फैट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ी तो इशू ये है। इस पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ शुरुआत से बताना चाहूंगी। फैट और ऑयल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों आप बोलेंगे, बहुत सारे जितने भी डाइट प्लान्स आते हैं उसमें बताते हैं आपको फैट्स खाना ही नहीं चाहिए, फैट ही वो रीजन है जो कि आपके बॉडी में फैट डाल रहा है। ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर को चलने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। लेकिन होता क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट भी हटा देते हैं, हम सिर्फ फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट खाएं, फैट को भी अवॉइड करें और हम स्वस्थ रहेंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर ये साइंटिफिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात हटा दे तो हमारे शरीर को खाना चाहिए न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस फूड चाहिए, जिसके लिए फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों बोलिएगा,
हम जैसे बोलते हैं विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई के विटामिन। आपने देखा होगा आजकल लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। उसका एक रीजन है लोग ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट से फैट को हटा रहे हैं। तो फैट को कंप्लीटली नहीं हटाना चाहिए हमारे डाइट से। मिनिमम ये डिपेंड करता है, अगर बच्चा है तो वो 25 से 30 ग्राम 25 ml तक फैट अपने बॉडी में ले सकता है। लेकिन अगर हमारे जैसे एडल्ट की बात करें तो हमें 20 to 25 ml फैट की जरूरत होती ही है, तभी हमारे बॉडी में जो विटामिन होते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और हमें डिफिशियंसी नहीं होगी। पहली जो ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैट और ऑयल हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो अभी आपने सोशल मीडिया पर होने वाले डॉक्टर्स की डिबेट की बात करी है। इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल इश्यूज, बेसिकली इट्स अ कमर्शियल इश्यूज, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा डिबेट आया था कि हमें घी खाना नहीं चाहिए, हमारा बॉडी खराब होता है। पर आज वही 20 साल के बाद वो रिसर्च होकर के आना लगा कि ये हमारे जो देशी घी है वो हमारे शरीर में लुब्रिकेशन का काम करता है, स्पेशली हमारे नी जॉइंट्स एंड अदर बिग जॉइंट्स के लिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई कैन से कि आज से 20-25 साल पहले जब ये डिबेट होना शुरू हुआ तो यूएस की ऑयल कंपनीज ने इसको प्रमोट किया कि हमें जो है ऐसा देशी घी नहीं खाना चाहिए, हमें रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए या वेजिटेबल ऑयल खाना चाहिए। ठीक है, अगेन ये एक इशू शुरू हो गई है, डिबेटेबल इशू है। पर मैं एज ए डाइटिशियन आपको बताना चाहूंगी कि हमें फैट दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट सिंपल सा आप एक लेमैन के टर्म में समझिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, दैट इज अनसैचुरेटेड फैट। और जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है दैट इज सैचुरेटेड फैट। तो जनरली हमें अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट को ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया कि एक हेल्दी एडल्ट के लिए 20 ml ऑयल जरूरत है, तो हमें ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, हमें ये माइंड करना है कोई भी ऑयल खाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, जो ये हम फैट या ऑयल की बात करते हैं, अपने एड में देखा होगा डिफरेंट ब्रांड में कि इस फैट एंड ऑयल में ये मूफा है, ये पूफा है, आपने ऐसा एड में देखा होगा। पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसके भी ब्रांचिंग होते हैं, बहुत साइंस में नहीं जाएं अगर हम, तो हम बताएं कि कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है जो 100% कंप्लीट है, जो हमारे बॉडी को सारे रिक्वायर्ड बेनिफिट जो है हमें प्रोवाइड करे। इसीलिए हमें बेटर स्ट्रेटेजी और बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है, हमें ऑयल को मिक्स वेराइटी ऑफ ऑयल शुड बी यूज्ड एट आवर होम। लाइक कि हर ऑयल की अलग अलग स्मोक पॉइंट होती है। आप देखते हैं कुछ ऑयल को डालते ही वो उसमें से धुआं निकलने लगता है, कुछ से देर से धुआं निकलता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो कुकिंग है, हमारी जो मेथड है प्रिपरेशन की, खाना बनाने की, उसमें उस पर्टिकुलर फूड को बनाने के लिए हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। अगर हमें कोल्ड सैलड बनाना है तो ऑब्वियसली उस समय हमें ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए, ऑलिव ऑयल इज नॉट बैड। उसी तरह अगर हमें सब्जी बनानी है तो हमें मस्टर्ड ऑयल यूज करनी है। अगर कुछ हमें फ्राई करना है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनके स्मोकिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, तो हमें उनकी यूज करनी चाहिए। अगर दाल में तड़का देना है तो हमें देशी घी यूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें सांभर में तड़का देना है तो हमें जो है सेसम सीड ऑयल यूज करनी चाहिए। कुछ में कोकोनट ऑयल की अपनी बेनिफिट होती है, तो हमें घर में कोशिश करनी चाहिए कि मिक्स ऑफ ऑयल यूज करें और अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन यूज करें, सो दैट कि हमारे बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट करे। बट याद रखें 20 ml से ऊपर हमें विजिबल फैट नहीं यूज करना है। सो यही मेरा मैसेज है कि कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, क्योंकि कोई भी ऑयल कंप्लीट नहीं है, तो हमें मिक्स ऑफ ऑयल यूज करना चाहिए। आई होप किशोर जी मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन किया, हमारे व्यूअर्स को इससे फायदा होगा। आपने इनडायरेक्टली ये बता दिया, फेस्टिवल और नो फेस्टिवल पकौड़े नहीं खाना है। आप पकौड़े समटाइम्स, देखिए किशोर जी, मेरा ये मानना है कि शरीर के लिए सिर्फ खाना नहीं खाना चाहिए,
सम टाइम हमें जो है अपने आत्मा सोल के लिए बोलते हैं ईट मैक्सिमम टाइम फॉर योर बॉडी बट सम टाइम्स यू मस्ट ईट फॉर योर सोल। ऐसा नहीं है कि आज फेस्टिवल है। आखिर ये बताइए हम जिंदा क्यों हैं और काम क्यों करते हैं? खाना खाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए। जब हम अच्छा खाना खाते हैं हमारा दिल खुश होता है। कोई भी सेलिब्रेशन इंडिया या किसी भी कंट्री में क्या वो कंप्लीट हो सकता है विदाउट फूड? खुशी हो, गम हो, food is an integral part of our life. We must enjoy the food, but we should know when to eat, what to eat, and how much to eat. That's all. और अगर आपको पकौड़े भी खाना है तो ये जाके मार्केट में वो समोसे डाल रहे हैं, फिर उसी कढ़ाई में दोबारे ऑयल, उसी ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, 10 times used ऑयल खा रहे हैं. No, you can have पकौड़े, पूरी, everything in your life. बट ये नहीं रोज रोज खाना है. बट सम टाइम फेस्टिवल आया, यू मस्ट एंजॉय इन लिमिटेड क्वांटिटी, बट गिव सोलेस टू योर सोल. दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ हैविंग फूड इन योर लाइफ. दिव्या जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी को उंगली पकड़ने की छूट दीजिए तो वो पहुंचा पकड़ लेते हैं. जैसे आपने कहा कि कभी कभी हमें सोल के लिए भी खाना चाहिए. हाँ जी. हमेशा शरीर के लिए ही नहीं. हमारे यहाँ उल्टा होता है कि कभी कभी वो शरीर के लिए खाते हैं, बाकी टाइम सोल के लिए खाते हैं. अब मेरा सवाल आगे ये है दिव्या जी कि वेट लूज करने के लिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वेट लूज करने के लिए लोग यही करते हैं, ट्रेंड चल रहा है. हाँ जी. इसके क्या फायदे नुकसान है? देखिए किशोर जी, मेरा जो अपना प्रैक्टिस है उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करती हूँ. मैं शायद थोड़ा सा रूटीन में नहीं चलती हूँ. जो ट्रेंडी डाइट प्लान जो प्रोवाइड करते हैं मैं उसमें आई डोंट बिलीव. ना ही उसको साइंटिफिक बोलते हैं और इथिकल डाइट प्लान्स होते हैं. हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग. अगर हमारे बॉडी को और माइंड को, और प्रोटीन का क्या काम है? मसल या बॉडी बिल्डिंग. ठीक है, हर चीजों की अलग अलग रोल बनी हुई है. लेट्स सपोज आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं रोल बदल करके बोलूं कि नहीं, जो आदमी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है वो अभी जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा. तो जरूरी है बैलेंस अप्रोच होने का लाइफ में. कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, आप मिनिमम क्वांटिटी जो आपके डाइट में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है 50% ऑफ टोटल कैलोरीफिक रिक्वायर्ड. और ये 50% जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो आपके बॉडी में जाए और इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करते, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है. वो फाइब्रस फूड होते हैं, जनरली जो फाइब्रस होते हैं. तो हमें अपने खाने में चॉइस बनाना चाहिए. 10 to 15% हम इजिली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले, और बाद बाकी जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ले. इससे होगा कि हमारे जो एनर्जी, हमारे बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अब हमें बैठ करके तो जीना नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा. अगर बॉडी लिया है ह्यूमन का तो वी मस्ट हैव टू वर्क समथिंग. तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. प्रोटीन है, ठीक है, उसका डाइजेशन होता है, वो डिफिकल्ट होता है, तो वही काम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी करता है. लोग ये मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे अपने डाइट में सिर्फ प्रोटीन लेते हैं. प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें हमारे किडनी पे बहुत एक्सेसिव लोड पड़ता है. ऑब्वियसली आप किडनी पर अगर एक्सेसिव लोड डालेंगे तो किडनी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. सिंपल सा एग्जांपल है, सभी लोगों के पास केंट या वाटर प्यूरिफायर होगा, उस पे क्या लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन? You can filter 70 liter of water in a day. It's written कि इसकी इतनी कैपेबिलिटी है एक दिन की 70 लीटर पानी की. उसी तरह आपके किडनी की कैपेबिलिटी है 2.5 टू मैक्सिमम 3 लीटर वाटर फिल्टर करने की. जब आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं और आप ज्यादा पानी लेते हैं तो किडनी पर क्या होता है? लोड बहुत ज्यादा पड़ता है और वो मैक्सिमम रन में जैसे मशीन खराब हो जाती है वैसे आपके किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. लोग रियलाइज नहीं करते, शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए अपनी लॉन्ग लाइफ को वो मुसीबत में डाल देते हैं. उसी तरह फैट भी खाना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया है. तो एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है. ट्रेंडी क्या है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लाइफ के लिए क्या जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो बस यही है। और जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लोग वेट लॉस करने के लिए बात करते हैं कि हमें ऐसा डाइट चाहिए, लेकिन जो आज का हमारा सेशन है माइंडफुल ईटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस पिक्चर में आता है कि आप एक बैलेंस खाना खाने के बावजूद भी कैसे अपने हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। अभी आपसे बातचीत के क्रम में मैं आगे बताऊंगी ये क्या है और कैसे आप सब कुछ खाकर अपने बॉडी, अपने सोल के लिए खाकर के भी आपकी वो जो आपने बोला कि हमारी प्रैक्टिस है, किसी को उंगली दो तो वो पहुंचा पकड़ लेता है, एक दिन के जगह हम रोज ही फ्राइड फूड खाना चाहते हैं। तो कैसे इस तरह की जो मेंटालिटी या हमारी थॉट प्रोसेस है या जो हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, वो कैसे हम माइंडफुल ईटिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। और वेट लॉस इज जस्ट अ सिम्टम, वेट जो आपका सिम्टम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के बाद वेट लॉस तो खुद ब खुद हो जाएगा, दूर चला जाएगा। आपने आज दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही बाकी के अलावा, और ये लोगों को समझने वाली बात है। एक तो ये कि आज हमारे हेल्थ पर कमर्शियल इंटरेस्ट हावी हो गया है। हाँ जी। दूसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है, और आई मस्ट कन्फेस कि मुझे भी नहीं पता था, कि दिन भर में 3 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। मैं तो सोचता था 4 लीटर 5 लीटर, जितना ज्यादा पानी पियो उतना अच्छा है, किडनी पर जोर पड़ता है। ये आपने बहुत बड़ी बात की। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि एक समस्या हमारे यहाँ है ओवर ईटिंग की। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ओवर ईटिंग क्या है, कब हमें कहना चाहिए स्टॉप। हम खा रहे होते हैं और खाने के बाद जब हम खत्म कर चुके होते हैं तब हमें 5 मिनट के बाद पता चलता है कि ओवर ईटिंग हो गई। हमें कब कहना चाहिए स्टॉप? किशोर जी, एक वर्ड आया है मल्टीटास्किंग। जो लोग मल्टीटास्क करते हैं, हम उनके बारे में काफी बोलते हैं ना, हाई रिगार्ड रखते हैं, बड़ा टैलेंटेड बंदा है, सारे काम कर लेता है दुनिया के, बहुत उसको अलग नजर से हम देखते हैं। एक आदमी जो शांति से ठहर ठहर के काम करता है, उसके बारे में हमारी इमेज थोड़ी होती है, ज्यादा इफिशिएंट बंदा नहीं है। ये प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में आ गई है, हमारी छोटी सी लाइफ है और हम बहुत सारा चीज पाना चाहते हैं, भाग रहे हैं जिंदगी में, और वो हमारे लाइफ में इतना स्ट्रेस एंजाइटी पैदा करती है, हमें पता ही नहीं है कि आज क्या हमारे साथ हो रहा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पर लोगों को अभी लगता है अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे अभी ये काम करना है, मुझे अभी वो काम करना है, बच्चे का होमवर्क करना है, ऑफिस का ये काम करना है। हम शांत नहीं रहते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछली बार कब आप शांति से बैठे होंगे और कुछ नहीं किया होगा? यू वर डूइंग नथिंग। हमारे व्यूअर्स से भी अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, डूइंग नथिंग, लाइफ इतनी छोटी सी है, डूइंग नथिंग मीन्स क्या? हम पूरे टाइम कुछ ना कुछ, एटलीस्ट हमारा माइंड कुछ ना कुछ करता रहता है, हम कभी शांति से नहीं बैठते। यही एक प्रॉब्लम है। जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको अब मैं बताती हूँ कैसे कोरिलेट करता है, कि हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। स्पेशली आप एक छोटे बच्चों को भी देखिएगा ना, 1 साल के बच्चे को भी, तो माँ उसको कैसे खाना खिलाती है, मोबाइल पर एक राइम लगा देगी, टीवी पर एक गाना चला देगी और बच्चा चुपचाप खा लेगा। माँ बहुत खुश कि मेरा बच्चा ने पूरा खाना खा लिया, मैंने खिला दिया। पर उन्हें पता नहीं है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया है, बच्चा टीवी एंजॉय कर रहा था, आपने उसे चीट किया है, उसके मुंह में डालते चले गए और वो उसको खाते चला गया। उसके बॉडी को क्या लगा क्या नहीं लगा ये हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमने अपनी ड्यूटी करी, खाना खिला दिया। यहीं से शुरू होती है माइंडलेस ईटिंग की। हमें पता नहीं होता है हम खा रहे, हम भी काम करते हैं। कितनी बार हमारे सामने टीवी चल रहा है, हम किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, वी थिंक कि हम अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमें पता नहीं होता है हम खा रहे हैं, प्लेट में इतना खाना डाल दिया और खा लिया। हमने क्या खाया? मेनी अ टाइम्स आप पूछोगे कि खाना में आलू के पराठे थे या गोभी के पराठे थे, तो वो इंसान बता भी नहीं पाएगा कि उसने क्या खाया। मास्किंग ऑफ टेस्ट, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। अब जब हम इस ढंग से खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा खाना तो खा जाते हैं पर हमें पता ही नहीं लग पाता किस जगह हमारा पेट भर गया, क्योंकि ध्यान नहीं है।
अगर हम माइंडफुली खाना शुरू करें, व्हाट इज माइंडफुल? माइंडफुल मीन्स कि आप अपने फिजिकल और इमोशनल सेंसेस को फील करते हुए आप जो काम कर रहे हैं, बीइंग लिविंग इन प्रेजेंट, अवेयरनेस जो आपके प्रेजेंट की है वो आपके पास हो, आपके सराउंडिंग में क्या है, यू आर एंजॉयिंग योर फूड। हमारे 5 सेंसेस हैं, हम 5 सेंसेस से जब अपने खाना खाते हैं, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत अच्छा बताया गया है हाथ से खाना खाना, 5 उंगलियों के इस्तेमाल से। पर वो जैसे जैसे मॉडर्न कल्चर आ गया, हम स्पून और फोक से खाते। हमारा जो एक सेंस है टच का, वो मिस हो जाता है। जब हम खाने को टच नहीं करते तो हमें पता नहीं लगता है, मुंह में जाने के बाद पता लगता है कि वो क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, क्या है। लेकिन जब हाथ से उसके टेक्सचर को फील करते हैं तो वो एक डिफरेंट फील होती है। तो यू नीड टू कनेक्ट विथ योर फूड, कि आप जो खाना खा रहे हो वो क्या खा रहे हो, उसका सेंस आई से देखो कि वो कौन सा खाना है, उसका कलर कैसा है। हमें चाहिए व्हाइट पास्ता, उससे बेटर है आप टोमेटो डाल दो, ग्रेप्स डाल दो, वो शलजम डालो, चुकंदर डालो, कलरफुल प्लेट्स है आपके, वो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हमें वो खाना अच्छा नहीं लगता है सैलड, बिकॉज क्योंकि हमने अपने देखने के सेंस को, विजन के सेंस को यूज ही नहीं किया। टेक्टाइल टच को हमने यूज ही नहीं किया, फोक डाला, नाइफ डाला, चॉपस्टिक्स डाला, उठाया, खा लिया, हमने उसे टच नहीं किया। हमने इतने जल्दी में रहते, इतनी ऑयल रहती है या बहुत सारे एसेंस डाल दिए, फ्लेवर्स डाल दिए, कि खाने का जो असली फ्लेवर होता है हमें पता ही नहीं होता है। कि पहले के जमाने में लोग खरबूज लेते थे, उसकी खुशबू लेते थे कि हाँ इसमें अच्छा महक है। क्या आज का कोई जनरेशन बता सकता है कि खरबूज की महक क्या होती है? मैंगो की खुशबू से क्या वो बता सकते हैं ये कौन सा मैंगो है? क्योंकि हमने अपने सेंसेस को यूज करना बंद कर दिया है। पहले खरबूज बहुत अच्छा लगता था, मस्क मेलन, पर आज खरबूज पता ही नहीं है कि ये खुशबू वाली खरबूज है, ये कैसी खरबूज है, ये कैसा पपाया है, ये कौन सा फ्रूट है, ये कौन सा वेजिटेबल है। हर वेजिटेबल, हम पहले राइस भी लेते थे तो उसकी खुशबू लेकर खरीदते थे, आज पैकेट में आता है इंडिया गेट इज गुड राइस, लाल महल बासमती इज गुड ब्रांड, हम उससे खरीद करके लाते। तो वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग आवर सेंसेस। जो हमारे सेंसेस होते उसको जब हम यूज करने लगेंगे ना तो खाने में इंटरेस्ट आएगी, खाने में इंटरेस्ट आएगी। और जब टच करोगे, खाओगे, अपने सराउंडिंग को फील करोगे, यू विल फोकस ऑन योर फूड। तो अब जब खाना शुरू करोगे तो थोड़े से खाने के बाद ही आपको लगेगा कि मेरा पेट और मन दोनों भर गया है। और होता क्या है, जब हम माइंडलेस ईटिंग करते हैं तो खाने के बाद हमें कहीं क्लू नहीं मिलता है, कोई क्यू नहीं मिलता है कि अब आपका पेट भर चुका है, स्टॉप ईटिंग। लेकिन जब आप माइंडफुल ईटिंग करोगे तो आपका खाने का खुद पता लग जाएगा कि अब मेरा पेट भर गया है, आई डोंट रिक्वायर मोर फूड। एक चीज और बताऊंगी, दो आई एम अ डाइटिशियन, पर मैं अपने क्लाइंट को ये लिख के नहीं देती हूँ, बताती हूँ कि 2 रोटी खाना। मैं उन्हें बताती हूँ माइंडफुल ईटिंग करो और खुद से जज करो कि मेरा पेट कहाँ भरा है। क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शन से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका मशीन अलग है। किसी दिन आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, किसी दिन आप एकदम आराम कर रहे हो। मैंने आपको लिखा जिस दिन 2 रोटी खानी है, और हो सकता है आपने बहुत एक्सेसिव वर्क किया, आपको 2.5 रोटी खाने की भी भूख है, तो मैं तो आपको गाइड नहीं करूंगी। यू शुड बी योर ओन गाइड। आई कैन टेल यू कि कब खाना है, क्या खाना है, लेकिन कितना खाना है इसके जज आप ही होना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा क्या खाना है। देयर शुड नॉट बी एनी डाइट प्लान कि आपको कितना खाना है। यू मस्ट ईट माइंडफुली एंड यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, बिकॉज योर ब्रेन विल गिव यू सिग्नल, नाउ यू आर फुल, स्टॉप ईटिंग। अगर इस तरह से हम खाना शुरू करें तो ऑब्वियसली हमारा वेट कभी नहीं बढ़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब है आम भाषा में कि क्या खाने के साथ साथ कब और कैसे खाया जाए, ये एक आम भाषा में है। अब शंकर जी नाराज हो रहे हैं, अब ओवर टू यू मिस्टर शंकर। No, I'm not angry. I was actually very happy to listen to all this, and most of the questions that I wanted to ask Kishore already asked. So I will just move on to one question, one or two questions, Dr. Prakash. Yes. We are celebrating 75 years of India's independence. As a dietitian nutritionist, what do you think were some of the landmarks that India achieved in the field of diet and nutrition? Yeah, India has achieved one, whether it's, I can say negative or positive, malnutrition is still there. Earlier it was malnutrition in form of undernutrition. Now it's in form of overnutrition. Almost 1 in 5 adult is obese in India.
It's very surprising. Obese, like whatsoever is standard for BMI. BMI is the standard for measuring your obesity. For other words, we like all the apps says that if you are having more than 25 BMI, 25 kg per meter square BMI, then you are obese. But as per Indian standards, above 23 is BMI. If you are having above 23 BMI, you are obese. So 1% out of every 5 person is obese in India. So earlier it was undernutrition problem, now it's overnutrition even. And because of this overnutrition, people are started suffering from different lifestyle disorder. In India only, approximately 70% people of Indian origin are suffering from one or other type of lifestyle diseases, and these are non-communicable diseases. And because of these issues, जहां हमारा कंट्री को एक बोलते हैं ना कि बजट की जरूरत होती है फॉर अदर डेवलपमेंट वर्क, वी आर स्पेंडिंग दैट मनी फॉर आवर हेल्थ इश्यूज, एंड दीज इश्यूज कैन बी इजीली शॉर्टेड आउट फ्रॉम आवर कंट्री. बहुत सारे स्कीम है, जैसे अगर बात करें कि मिड डे मील बच्चों के लिए ये है वो है, पर एक जो कंप्लीट हॉलिस्टिक अप्रोच है, मोरिंगा प्रोजेक्ट, अपने फार्म करो आप, जैसे फिशरीज के लगाओ, पोल्ट्री के लगाओ, बहुत सारी हुई है. पर हमारे कंट्री में अभी भी जो एक अवेयरनेस की बात करते हैं, दैट इज मिसिंग. मासेस को अवेयरनेस है, जो लोग सोशल मीडिया पे भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया एंड शंकर जी की कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गया है. जहां प्रॉफिट की बात होती है, पीपल स्प्रेड दोज मैसेजेस मोर थ्रू देयर सोशल मीडिया. एक न्यूज़पेपर मीडिया है जहां पर आप बोलो कि जेन्युइन मैसेज आता है, लेकिन वो मिसिंग है एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज पासिंग थ्रू एवरीवेयर. लोगों के पास रॉन्ग मैसेज है. ये कंट्री में बहुत अच्छी हुई है, गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड, एंड आपका प्लेटफॉर्म, आई एम रियली सो थैंकफुल कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को अवेयर करना शुरू किया है. एंड लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज मिसिंग. एंड वन मोर थिंग, लाइक आई स्पीक इन हिंदी बिकॉज हमारे maximum, you will be surprised to know that only 10% of our population understand English, and most of the, and 40% population understand 40 to 45% Hindi. But most of the like material, reading material, study material, everything is available in English. So this is one of the another problem. Like रूरल जो विलेज होते हैं, वो लोग इन बातों को समझ नहीं पाते कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है. तो ये प्लेटफॉर्म, कंट्री ने बहुत कुछ पॉलिसीज बनी है, बहुत सारी चीज कंट्री ने अचीव भी किया है, बट एक प्रॉपर अवेयरनेस स्कीम या कैंपेन के बिना ये सारी स्कीम जो है थोड़ी सी पीछे रह जा रही है. तो बस यही है कि जो ओवर न्यूट्रिशन, और हम अपने कंट्री को जो 75 ईयर्स के बाद भी है, उनके पास अगर एक अवेयरनेस हो तो they can give their contribution towards the development of our country. Small contribution, बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है. तो वही हमारी, अगर हम खुद को स्वस्थ रखेंगे, मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रखेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इंडिविजुअल से सोसाइटी बनता है, सोसाइटी प्रोडक्टिव देगा, और obviously government will achieve and our country will achieve the target of developed nation. One last question from my side. How important is periodic fasting, like once in 15 days, and also intermittent fasting as part of mindful eating? Yeah, if you are doing like, I don't favor much, though there are so many, too much of discussion about intermittent fasting and like periodic fasting. In our country also, people used to fast, like Monday ka fast, Tuesday ka fast, Friday ka fast. There are so many fasts were there, like Navratri ka fast. That is okay. Sometimes it's okay. But intermittent fasting, मैंने बताया ना कि wrong information. Who should do intermittent fasting? What is the requirement of doing intermittent fasting? आपका जो वो बोलते हैं ना 16 आवर का फास्ट के बाद 8 आवर का ब्रैकेट, तो 20 अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. लेकिन वो टाइम क्या है? आप मॉर्निंग में पीपल व्हाट दे डू कि आप लंच तक खुद नहीं खाते हो, दिन के 2 बजे से रात के 10 बजे तक खा रहे हो. बट आइडियली यू शुड नॉट ईट आफ्टर सनसेट. तो आपका ब्रैकेट क्या होना चाहिए? यू मिस योर ब्रेकफास्ट. उस पूरे बार्गेन में आप ऐसे भी आप सोच करके जस्ट इमेजिन कि आप रात को अगर 8 o'clock खा लेते हो,
अगले दिन सुबह में आप 8 o'clock ब्रेकफास्ट करते हो, 12th आवर का तो ब्रेकफास्ट आपका फास्टिंग ऐसे ही होता है। अगर आप जानते हो कि सही समय क्या है, तो इस तरह की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रैक्टिस, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ सम like a good person, trained person who can guide you what is important. किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, एंड दे फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप मुझे बताइए उसको बेनिफिट होगा कि उसका क्या प्रॉब्लम होगा। तो आई डोंट एडवोकेट इन जनरल, इट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड गुड प्रैक्टिस, बट पीपल शुड नो हु शुड प्रैक्टिस दिस एंड हु शुड नॉट। सो दैट्स ऑल। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हमारे सभी लोग टाइम पर अगर खाना शुरू करें तो 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हम सभी करते हैं। और जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 बजे के विंडो से रात के 10 बजे के विंडो में 8 घंटे ईटिंग विंडो नहीं रखनी चाहिए। और उसमें बहुत सारा खाना खाओगे तो आप अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप ओवरलोड करोगे। अच्छा, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, टाइम पर खाना खाओ और टाइम टू टाइम अपने मशीन को फ्यूल देते जाओ, वो इतना अच्छा काम करेगा, ना वेट आएगी। और आप प्रैक्टिस करो विद इन 3 months। आई कैन गिव यू गारंटी, आई कैन से गारंटी नॉट वारंटी, कि अगर आप 1% 1% अपने आप में चेंज करोगे अपने लाइफ स्टाइल में, तो विद इन 100 days यू विल फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट पर्सन 2.0। Thank you very much. We are run out of time, but let me tell you one thing. One of these days, Kishore and I would definitely come knocking at your door to have a mindful eating of lunch with you. Thank you very much. Sure. Thank you so much. You're always welcome. Thank you very much. And I hand over and wishing you a happy Independence Day well in advance. Thank you so much. Happy Independence to all of you. I hand over this platform to Kishore to conclude this session. थैंक यू सर। कंक्लूड करने से पहले एक सवाल मेरा और भी है दिव्या जी से। वो ये है कि एक बात कही जाती है कि जब हम नट्स खाते हैं तो उसके बारे में कही जाती है कि इसको सोक करके खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही खाना चाहिए। क्या रियलिटी क्या है? आप सोक करके खाना और बिना सोक करके खाना, आप कोई भी जब चीज को सोक करते हैं, थोड़े से वाटर में डाल करके आप जब सोक करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जब हम ड्राई करते हैं तो जैसे बोल रहे हैं ना कि एक लेटेंट स्टेज में चला गया, सोया हुआ स्टेज में चला गया, जब उसको सोक करते हैं ओवरनाइट तो उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इफ यू वांट टू गेट, ऐसा नहीं है कि जो आप बिना सोक किए खाए तो उसके बेनिफिट्स नहीं निकले। एट द सेम टाइम जब हम उसको ड्राई फॉर्म में करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स को ड्राई फ्रूट मीन्स ड्राई करके बनाते हैं, तो साथ में कुछ इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स भी होते हैं किसी भी प्रोसेस से हम उसको जब ड्राई करते हैं। तो जब हम उसको सोक करते हैं, जो उसके गुड न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्सिमम फॉर्म में होते हैं, और जो कुछ बैड पार्ट उसके हो गए हैं वो सोकिंग के थ्रू बाहर आ गए, और वो उसको हम रिंस करके बाहर निकाल दिए, और वी आर टेकिंग गुड फॉर्म ऑफ द, लाइक ऑलमोस्ट आप समझ लो कि फ्रेश फॉर्म में आप खा रहे हो, तो वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। थैंक यू दिव्या जी, ये कंफ्यूजन बहुत दिनों से था, मुझे भी था, आपने इसको क्लियर किया। थैंक यू। आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अगले रविवार को फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, लेकिन माइंडफुल ईटिंग के साथ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। Thank you.